Hello everyone, welcome to Gate Academy and Unacademy. So from today onwards, we are going to start a special course over the engineering mathematics. And as the lectures are supposed to come on Gate Academy Global, my mode of communication is going to be in English only. And as it has been very clear over the thumbnail, we will try to learn almost all important topics as well as the concepts related to the engineering mathematics. Either you have been from electrical, electronics, mechanical, civil, instrumentation in this particular series of videos. Uh, so far, the concepts which I am having for this particular the zones of mathematics, I would try to cover almost all important topics of the mathematics through the concepts, through the questions. So already few number of questions which had been asked in gate examination, few of the self-created questions, those all questions I would be taking, and with the help of those questions, definitely I would try to explain the important concepts of the engineering mathematics, which has been relevant to your particular gate stream. And at the same time, I would also have a two-way communication. So in future, if you guys find a little bit difficulty in a certain topic, and if you have been attending my classes in a regular basis, definitely I will look after you as well. So whatever the input you guys have been giving, after some time, definitely in that sequence, I will take the remaining complete term. Agreed what I'm saying? So as far as the topic which we are going to start in today's class is going to be concept of maxima and minima. In daily basis, we are going to spend around almost 1 hour. So I would request to each one of you try to share this session to max people. So anyways, without talking here and there, straight away hop into the topic which we are going to discuss in today's class. We are going to discuss about the concept of maxima and minima, which you can see the topic of today's class. Topics of today's class. Yes, topic of today's class. My dear friend, as far as the concept of maxima and minima is concerned, no, there are two categories of the maxima and minima. First, the function which carries only and only one independent variable. The second, which carries the two independent variable. As far as the gate examination is being concerned, both kind of questions are being repeatedly asked. But one thing has been quite sure, you can expect almost in 3 paper, 2 question paper carries 1 questions with the weightage of 2 marks from the concept of maxima and minima. So let me move forward. So what we have been doing over here, my dear friend. So from today onwards, we have been starting the concept of maxima and minima. We have been starting the concept of maxima and minima. Yes, we have been starting from today's class, and probably till tomorrow we will be able to conquer almost all concepts related to the maxima and minima. As it had been clearly communicated, the maxima and minima can be further bifurcated in the two parts. Whether the given function carries one independent variable or two independent variables. So what I tries to communicate over here, if you had a function which is being dependent over only and only one independent variable, let's take that independent variable is x. Let's take you had a function sine of x, you had a function of e to the power of x, you had a function x cube plus of 3x square plus of 2x. If you'll focus over all three functions, they had been carrying only and only one independent variable, and hence from here onwards, those kind of functions would be categorized under the function of one independent variable. So I can say out of 100% times, usually 80% times the questions are getting asked from single variable concept of maxima and minima. But many of the times it is also being seen that the given function carries more than one independent variable, and there also the questions are getting framed based on the concept of maxima and minima. So you can see how the questions are getting framed. As it had been clearly communicated, the two number of variables are going to get involved over here. Like you can have a function x square plus of y square. You can have a function like x square plus of 2xy plus of y square. Anyways, in the first portion of concept of maxima and minima, my basic focus would be over the single independent variable functions like sine of x, e to the power of x, x cube plus 3x square plus of 2. Is that part clear? So I think this has been the right time. You should also be writing few of the important points which I have been writing over here. As far as the concept of maxima and minima is been concerned, it has been always applied over a function. And even the function could be the two different kinds. The function which carries only and only one single independent variable, and the next kind of the function which carries the two
independent variables. But in practical, you can also have a function which carries 3, 4, 5 or n number of independent variable, and there also the concept of maxima and minima do exist. Once you'll go in practical scenario, once you'll go for higher studies, or if you'll be working in a design section, definitely you will have a function which carries 3 or 4 number of independent variables, and there also we optimize the given function in terms of their maxima and minima. But this has not been the scope of my GATE examination. Yes, so we had to focus only and only two different categories of the function for the sake of maxima and minima. For the sake of maxima and minima. That has been quite okay. Anyways, I am not going into very detailed form of each and everything. I would restrict to the concept till you will be able to solve almost all questions related to the GATE examination. Agreed? Anyways, let me go back. So, just a minute. Yes, we come back over here. My dear friend, my basic focus has been the concept of maxima and minima over a function which is been connected or which is been dependent over only and only one independent variable. That means you had this kind of mathematical functions. Now let me focus over the few important points or few important terminologies which we will be using again and again in this complete topic. Those are stationary point, critical point, point of inflection, saddle point, point of extrema, local maxima, local minima, global maxima and global minima. These are around 5 to 7 number of different terminologies. If you are really acquainted with this terminology, definitely you can smash any kind of problem related to the concept of maxima and minima. I had seen many of the times the student had the doubt between the saddle point and point of inflection. They feel like the point of inflection and saddle points are been same. Even they had the doubt whether the stationary point or the stationary points as well as extremas are being same. No. So let me focus over the few important terminologies which we use in concept of maxima and minima again and again. And once we are thorough with those important terminologies, definitely we can smash even further. My dear friend, again we have been going behind this. Just a minute. Yeah. Yes. So we come back over here. To find the maxima and minima of a function, we follow the following steps. And again, if we'll focus over the function, it carries only and only one independent variable. That means we have been focusing over the concept of maxima and minima, which is being carried with only and only one independent variable. What we do at very beginning, we take the first derivative of the function. And then compare with 0, and those all values which satisfies this equation, all values of x which satisfies this equation are said to be stationary point. If I say what does it mean by the stationary point, the stationary points are been the point at which the tangent over the given function f of x is being parallel to the x-axis. What does that mean by the parallel to the x-axis? If you have any of the line which is been parallel to the x-axis, its slope would be referred as 0. Could you really understood what exactly I wanted to communicate? So let me do one thing. Let me take a calculator. So I have been taking a calculator over here. Graphically, I am going to teach each and everything. So definitely you are going to enjoy the complete concept. See, if I have taken a graph, let me draw a graph over here. And let me draw the graph of sine of x. So here comes sine of x. Let me draw this down. And this looks something like this. See, this looks something like this. You can easily be able to figure it out. This has been the graph of sine of x. Yes. And you yourself would be able to visualize this, that at around pi by 2, the value of pi by 2 would be just lesser than 2. The magnitude has been reaching to 1, and similarly at pi it has been reaching to 0. At 3 pi by 2 it has been reaching to the -1, so on and so forth. Now I would like to know from each one of you, could you really find the stationary point over this function sine of x? Yes sir, these all points are the point where the slope of the given function had become 0. How did I know about it? What we are going to do over here, we are just going to draw the tangent
Let me draw the tangent over here, here, here. So for that, what I have been doing, I have been using tangent over here. See, if I put the tangent over here, the tangent is being called as a sparsrekha in Hindi, and you yourself would be able to understand the slope is been negative. If you come down to here, don't get confused that the slope is getting 0 over here, my dear friend. The worth of f of x is going to get 0 here, but the slope is negative. How? You will draw a tangent over this point, and once you will draw a tangent over this point, you will find that as the value of x is increasing, y is been decreasing, and hence the tangent is being negative. Same goes over here, here, everywhere. See, but here once you come, no, here, see, now you yourself would be able to understand. Now the tangent had become 0, or the slope of the tangent had become 0. So may I know how many number of points you had where the slope of the given function y or sine of x becomes 0? Obviously this all points, this one, this one, this one, this one, this one, this one, this one. So could you really figure it out? What does that actually mean of a stationary point? The stationary points are when the point where the slope of the given function becomes 0, or the tangent drawn over the given function is being parallel to the x-axis. Did you really understood what exactly I wanted to communicate? See, here the slope is positive. You yourself would be able to understand. But if I come over here now, see, the slope is 0. Slope is 0. Yes or no? So let me come down. Let me come down. And let me take a screenshot of it. Let me take a screenshot of it. Yes. Let me go back to my working board and we will try to figure it out, the concept over there only. So let me focus over the stationary point now. So for the stationary point, already we had a PDF. Let me take that important definition which we had there itself. So here comes this important outcome. So what we have been doing, we had just been taking a screenshot and we'll bring it to the working board. We will bring it to the working board. So yes, we had been focusing over a function which carries only one independent variable, and we will bring it to the working board and we will try to figure it out. See. So it has been the first step. This has been the first step. What we do? First, we calculate the first derivative of the given function and we compare with 0. The values of x for which this equation gets satisfied, they are being called as a stationary point. This is the necessary condition to find the extremum value of the function. Keep in mind, this has not been the sufficient condition, but not sufficient condition. We will take few number of example. To that, definitely you will be able to grasp this question very well. So we have already taken function f of x as sine of x. So may I know what are the different stationary points the sine of x carries? For that, what we had to do, as per the procedure, we had to take its first derivative. Either I can write this as a f dash x, either I could have written this as a dy by of dx, and this sine of x becomes cos of x. And now we had to compare this cos of x with 0. So may I know what are the different values where the cos of x becomes 0? And keep in mind, the cos of x has been the derivative of sine of x, and where the cos of x becomes 0, the derivative of sine of x becomes 0, or the tangent is being parallel to the x-axis. So the points, if we'll write it down, for the positive value of x, it would be pi by 2, it would be 3 pi by 2, it would be 5 pi by 2, and similarly it goes towards right hand side and left hand side as well. You yourself would be able to understand this fact very well. Yes sir, this has been happening. You see where it had gone. Yes, agreed? No, agreed, my dear friends. Even if I take its derivative, see, this is been a sine one, the solid one, and similarly this dashed one has been a cos one. And you yourself would be able to understand where the value of cos is becoming 0. The value of cos is becoming 0 over here. And where the value of cos is becoming 0, no, that is been pi by 2. And there, if we'll draw a tangent over the given function, that is being 0. And same goes over here as well. That is also 0. Same goes over here. That is also 0. So could you really understood why the first derivative of the function is being calculated to find the stationary point? The point of stationary has been the point where the slope offered over the given function is being parallel to the x-axis, or it is been quite horizontal. So I think this has been the right time I should take its screenshot and we will bring it to the working board.
Let me go back. Let me go back. So here comes image. Just a minute. Image. Recent image I am going to take on. Yeah. Yes. Recent image has been brought it over here. This has been sine of x. Sine of x, and you yourself would be able to see this has been the derivative of sine of x. In the desd form, it has been cos of x. Wherever the cos of x is becoming 0, no, the first derivative of sine of x is becoming 0. Where the cos of x is becoming 0, see here, and similarly see here, and then here, and then here. And as far as the sine of x has been concerned, it is quite sure, yes sir, there the slope becomes 0. There the slope becomes 0. If you will draw, definitely you can draw slope as well. You can draw slope as well. See, here the slope is been 0. 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 Yes, I would like to know from each one of you, at x is equals to 0. At x is equals to 0. At x is equals to 0. The given function sine of x had slope is equals to 0 or not, because I had seen many of the times even the student feel like this point has also been a stationary point. No, this has not been the stationary point, because once you will draw a tangent over here, sparshrekha, you will find the slope is not been 0, or it is not been parallel to the x-axis. So yes, this is going to be the slope over here. So may I know what does that actually mean of a stationary point? The stationary point is a point where the slope becomes stationed. The slope becomes unchanged. See, if you will focus over this curve, the slope is positive, 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 became 0, and now it has been coming to the negative. Similarly, if you will focus over this region, the slope has been negative, 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 and now it had become 0 and then becomes positive. So may I know when the stationary point do come into the picture? The stationary point do come into the picture whenever the slope becomes 0. Whenever the slope becomes 0. Could you really understood what I exactly wanted to communicate? Now, let me take an example now. If I have taken a complex function which is been dependent over one independent variable x. Let's take it's been a xy plane where the function f of x is to be drawn. Function of fx is to be drawn. Agreed? And the graph has been something like this. Like this. Let me pinpoint their working points. Let's take here the value of x is been 1, x is been 2, x is been 3, x is been 4, x is been 5, x is been 6. So just by having a visualization of this function in a graphical form, I would like to know for this given function, what are the different stationary points we had? I would like to have the input from each one of you. Among 1, 2, 3, 4, 5 and even 6. What are the different stationary points we had? My dear friend, wherever a smooth cusp is framed, no, either it has been lower facing concave, either it has been upper facing concave, by default there the slope of the first derivative is going to be 0, and those all points would be consolidated under the stationary point. So may I know what are the stationary points we are going to have for this given function? Obviously we will have 2, because you can see very well here the slope had changed its value and the slope had become 0 and now went to the negative, and same goes with 3, same goes with 4, same goes with 5. But I feel most of the student would be confused at point 1, and then they will get confused at point 4, and then they will get confused at point 6. My dear friend, at point 1 and point 6,
This has not been the point of stationary. Why? Because here the worth of the function had become 0. The value of fx has been crossing through the x-axis. That means their worth had become 0, but the slope is non-zero. If you'll draw a tangent over here, you yourself would be able to understand here the slope is been positive. Could you understand what exactly I wanted to communicate? Slope is been positive. And same goes over here as well. Here also slope is been negative. So don't think that the 1 and 6 is been a stationary point. Here the worth of the function is becoming 0. Here the slope of the function is not becoming 0. So obviously you should discard 1 and 6. You should discard 1 and 6. Did you understand what I am saying? Yes, sir. And at the same time, I have feel that most of the time the student had a little bit a doubt over this particular point. See what had been happening. The slope has been positive, had become 0, and again it had been lifted to the positive. But still the slope had become 0. My dear friend, as per the requirement of the stationary point, any point over the frame of real valued x where the first derivative of the function becomes 0 or the tangent over the given function is being parallel to the x-axis, So may I know which are the different values of x where the tangent is being parallel to the x-axis? Yes, sir. Yes, sir. Even yes, sir. And even yes, sir. Did you really understood what are being the different stationary points? Yes, sir. The stationary points are being 2. Then here comes 3. Then comes 4 and then comes 5. Nobody should have a doubt over 1 and 6. Could you really feel what exactly I wanted to communicate? So I feel the stationary point must be clearly known to all of us. The stationary points are in the point where the first derivative of the function becomes 0, or if I draw a tangent over that point, the tangent is being parallel to the x-axis. That's it. That's it. The stationary point has been clear. Now, I would talk about extrema. Extrema has been again a point, or it's been a terminology which is being used again and again in different questions. What does it mean by the extrema? The name itself has been self-explanatory. The point where the extremum value has been framed. Something extraordinary. Yes. See, you yourself would be able to understand what had been happening. See, value was continuously increasing. Let's take it has been raised to 0, then 0.123, and now it had went to a maximum value and further it had been decreased. So don't you think in this localized region this has been a maximum value, or I should say in this localized region this has been an extremum high value. So obviously this is going to be a part of extrema. And which kind of extrema? The extrema has been further subdivided into two parts, whether it's been the maxima, whether it's been the minima. So obviously it is going to be a kind of maxima. Same goes over the x is equals to 3 itself. What had been happening, my dear friend? The magnitude of f of x has been continuously decreasing and it went till f of 3 and again it had been shoot up. In this localized region, if you'll feel, then you'll find that at x is equals to 3, the worth of the function has been minimal most. And that is why it is again been an extremum value in this region. And that's a different story together. It has been lower inside. So obviously rather calling it maxima, I may call this as a minima. My dear friend, I would like to know from each one of you, the x is equals to 4, would it be qualified under extrema or it won't get qualified under the extrema? I would like to have the input from each one of you. I would like to have the input from each one of you. I would like to have the input from each one of you. No. See why? Magnitude was continuously increasing, had become stationary, and again it has been increasing. Now in this localized region, I can't say at x is equals to 4, the maximum or minimum is been arrived or extremum value is been arrived. So obviously x is equals to 4 would be kept outside within the stationary, extrema. So one thing has been quite sure. See. If you want to have extrema, by default at a point of extrema, the slope has to be 0. So I can say all of the extremums are a stationary point, but all of these stationary points are not extremum. Did you understand what I am saying? Did you really understand what exactly I wanted to communicate? So may I know what are the extremum points we are having? Anyways, I think it's been the right time I should also bifurcate the extremas into the two part. The first kind of the extrema is going to be maxima.
Anyways, what is been the localized maxima and localized minima, I would be discussing about it in the great detail. You need not to have any second thought. If you had come over here, definitely I will try to cover almost all important topics or the concepts related to the mathematics, but I would request to each one of you create the crowd so that even I will enjoy the complete process of teaching. It has been maxima and minima. Yes. May I know what are the different points would be considered under the maxima? May I know what does it actually mean of maxima? The localized region where the maximum value has been attained. That has been at 2, 3, no, sir, no, it has been minima. 4 has been discarded, sir, and even 5. So if I say in the given function or the draw of the given function, which are the points are been the point of maxima, I should say it has been x is equals to 2 and even it has been x is equals to 5. X is equals to 5. Yes, x is equals to 5. And if we'll talk about the minima, only and only one minima we had. Minima is at x is equals to 3. X is equals to 3. X is equals to 3. Yes or no? And may I know what x is equals to 4 has been called of? X is equals to 4 has been called as saddle point. Keep in mind, it is been called as a saddle point. It is been called as a saddle point. Yes, this is been called as a saddle point. It is been called as a saddle point, and this has been at x is equals to 4. Anyways, I would request to each one of you, rather going mathematical, better to have understanding graphical. What does that mean by the maxima? Wherever the lower facing concave is being created, no, that point of operation is being called as a local maxima. Similarly, upper facing concave is being created, no, that point of operation is being called as a upper facing or minima. So you yourself would be able to understand here, here. See, here top is been created, here valley is been created, here top is been created. So wherever the top is been created, that is going to be categorized as a local maxima, and wherever the valley is been created, that would be created or that would be categorized as minima. So you yourself would be able to understand. But here nothing had happened. Neither you have created a top, neither you have created a valley, but still the slope is being 0. Still the slope is being 0, and as still the slope is being 0, you yourself would be able to understand neither it is been extremum maximum value in vicinity of 4, neither it has been a minimum value, and that would be categorized under the saddle point. That would be the categorized under the saddle point. Did you really understood what exactly I wanted to communicate? My dear friend, in maxima, one of the important fundamental you must have seen maxima, the slope has been higher, it is becoming lower, 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 and lower. See, slope has been higher and had become lower and had become lower, had become even lower, and then became 0, it became negative, and now it has been a strong negative. So one thing has been quite sure, whenever the local maxima do exist in the picture, the slope changes its polarity from positive to negative. So at the value where the slope becomes 0, that is fine, but the slope had changed its polarity from plus to minus. So as far as this structure is being concerned, I can say the slope is being changed from positive to negative. Positive to negative. Yes. And same goes with the minima as well. Let me take the reference of this minima. See what had been happening. Again, the slope is being decreasing. Negative but decreasing, negative but decreasing. And here it became 0. And then again slope had become positive, more positive and more positive. Let me focus over this critical point. What had actually happened? Before 3, or I should say at 3 minus, the slope had been negative. At 3 plus, the slope is been positive. And at exactly 3, the slope is being 0. So whenever the minima is being raised or minima is being framed, no, keep in mind the slope polarity changes from negative to positive. Negative to positive. But the saddle point has been the saddle most point. Just you can remember this word as a saddle. I was expecting
that the slope had become 0. So obviously either it must be making a maxima, or either it must be making a minima, or I must say the slope was changing from positive to negative and negative to positive, but there it had not happened. Just try to understand how it had happened, my dear friends. Just try to understand. See, the slope was a large positive and it had been keep decreasing. If you draw a tangent, you yourself would be able to understand it had been keep decreasing, and here the slope had become 0, and from here onwards again the slope had become positive. So one thing has been quite sure, you can't say there had been the switching of slope polarity, and as there had not been any switching of the slope polarity, neither you can count this as a maxima nor you can count this as a minima. You can just write this as a saddle point. Just write it as a saddle point. So yes, so the slope continues. But how will actually know mathematically that you had reached to the saddle point? Quite easy. See, by default the saddle point would exist at a point where the first derivative becomes 0, because all of the saddle points are by default stationary points, because the slope is supposed to be 0 at that point. That is fine, sir. And even if you will calculate the double derivative at the given value of x, the value should also be 0. So by default you come to this point, that the point has been the saddle point. The point has been the saddle point. Did you really understood? Same goes with the maxima. Maxima, again the double derivative has been calculated. What we have been doing, the double derivative has been calculated at the stationary point. If the double derivative has been found to be lesser than 0 or negative, the point is going to be the point of maxima, and if double derivative has been calculated and if the value has been found to be positive, by default the minima is being getting created, or minima would be created. My dear friends, could you really understood what exactly I wanted to communicate? Could you really understood? I would like to know from each one of you whether you really understood what exactly I wanted to communicate. So let me draw a few number of questions, and with the help of those questions, definitely you will be able to communicate something. First thing, all extremums or extremum points are stationary points. Yes or no? Yes or no? That has been the first question which I am going to ask in today's class. The second question I am going to raise. All stationary points are extremum points. These have been the two different questions, and you have to give the answer in a form of yes and no. You have to give the answer in a form of yes and no. Tell me. All extremum points are stationary points. All extremum points are being stationary point. Obviously, sir. The first test for the extremum itself has been the first derivative. If first derivative has to get compared with 0, and those stationary point would be further scrutinized, and now we will be taking its double derivative and we will be keeping those values. If the value has been negative and positive, so definitely it is going to be alternatively maxima and minima. But one thing has been quite sure, which we have already seen earlier, my dear friend, either it has been maxima or minima. You yourself would be able to understand, either it has been maxima or minima. Just a minute. Either it has been maxima or minima, either it has been maxima, either it has been minima, maxima or minima, maxima or minima, maxima or minima. Yes, the slope is being parallel to the x-axis, or the slope is being 0. The slope is being 0. That must be clearly known to us. That is the key feature which we had learnt. Yes, this has been yes, sir. Absolutely yes. Now the next thing. All of these stationary points where the slope is become 0 had been extremum. No, my dear friend. There are been the possibility even you can have a stationary point as well. So yes or no? No. It has been false statement. There could be even the stationary, saddle point as well. There could be the saddle point as well. There could be the saddle point as well. Yes or no? So let me take
equation, and with the help of that equation I would like try to explain the thing, and I would like to have the input from each one of you. You must be able to judge the case. See what I have been doing. Let me do into the graph drawer. I had come to this place. Let me draw graph over here, and the graph or the function which we had taken is been x cube, which I have already crafted for you guys. It's been x cube, and here comes minus of 6x square minus of 6x square 6x square, and then comes plus of 9 of x plus of 9 of x 9 of x, and then comes plus of 15 plus of 15 plus of 15 where it had, yes, here it had been plus of 15. Let me draw this down. Yes, let me draw this down. Yes, this one. Yes, you yourself would be able to understand how this graph has been looking like. I had taken the reference of x cube minus of 6x square plus of 9 of x plus of 15. I would like to know from each one of you how many number of maxima, how many number of minima, how many number of saddle points we have for this given cubic polynomial. Just have a look of this graph and tell me how many number of maxima or minima we had, how many number of saddle point we had, or in general how many stationary point or how many saddle points we had. Tell me. I would like to have the input from each one of you. So I think it's been the right time I should be taking this towards working board, and we will try to discuss this concept there only. So let me go back. Just a minute. This one. Yes. Tell me how many number of stationary points we had. The stationary points are the points where the slope of the tangent becomes 0. So obviously if you draw the tangent over this point, it has been parallel to the x-axis, So all the way if you go down, you find x is equals to 1. All the way if you go down, you find x is equals to 3. So yes, for the given function x cube, you can see very well, x cube minus of 6x square plus of 9x plus of 1, that is been single independent variable function, had the stationary point at x is equals to 1 and x is equals to 3. Could you understand what exactly I wanted to communicate through this? X is equals to 1 and x is equals to 3. In the same sequence, if we'll be focusing over extremums. How many number of extremums we had? What does that actually mean of extremum? The extremums are the point where the extremely high or extremely low value has been created. You yourself would be able to understand in a vicinity of 1, the x is equals to 1 had the highest value. If you'll go towards left hand side or right hand side, the maximum value has been found at x is equals to 1 only. So yes, 1 is been even extremum and even 3 is been the extremum. My dear friend, just try to understand in this way. Extremum incoming or extremum along with saddle point becomes a stationary point. I repeat, extremum along with saddle point becomes a stationary point. But as far as this problem is been concerned, there had not been any stationary point, saddle point, and hence all of the extremums are being stationary point. And as it had been communicated earlier, even the extremums can be further bifurcated, whether it's been the maxima, whether it's been the minima. So obviously one you yourself would be able to understand would be categorized under maximum, a point of maxima, and 3 would be categorized under point of minimum. Agreed? How did you actually know that at x is equals to 1 the maxima has been arrived? It's been a quite simple mathematics, although we don't use. My dear friend, if you calculate the worth of the function at x is equals to 1, and if you go beyond 1, maybe towards right hand side or left hand side, if you come towards left hand side just before 1, that I had written as a f1 minus.
And similarly here it comes f1 plus. May I know which value is going to be the largest one? Obviously sir, f1 is going to be the largest one. Either you go just before 1 or just after 1. The worth has been maximum at x is equals to 1. So obviously x is equals to 1. Yes, Madhu. Sir, extremum are also global maximum. No, Madhu, that part I am going to come into the next class. And keep in mind, be present in all of the classes, because in each and individual classes you are going to learn definitely very good things. From where the local and global word do come, that we are going to see in future. Did you understand what I am saying? And same goes with minima as well. See what had been happening for the minima. If we'll focus over the f of 2, if you focus over the f of 2, you will find if you have been restricting yourself just before 2, that has been f2 minus, and just after 2, that has been f2 plus, you will find the worth is been larger and larger. So obviously at f of 2, the extremely low value is being created at least in vicinity of x is equals to 2. So Madhu, as you had asked the question, sir, whether it's been a local or global, so at least I can say in a vicinity of x is equals to 2, at x is equals to 2, the minimum most value is been created. So x is equals to 2 is been a local minima. And similarly, in vicinity of 1, x is equals to 1, you can, whether you go towards left hand side or right hand side, the maximum most value has been created at x is equals to 1. So obviously x is equals to 1 is been a, I should say it is been a x is equals to 1 is been a local maxima, and x is equals to 2 is been a local minima. My dear friend, but the local maxima and local minima you have already calculated through two process. The first step is to take the first derivative, try to get all of these stationary points, then take its double derivative. If in double derivative, the double derivative at its stationary point has been positive, it has been a point of minima. If it has been negative, it's been a point of maxima. It has been 0, it is going to be a saddle point. It is going to be a saddle point. But keep in mind, this could be a case. The local maxima or minima which you have searched for, no, that could be the minimum most value in an entire real axis, or could be a maximum most value in an entire real axis. But this has not been the case. See how this has been maxima, that has been sure, but once you'll go beyond 3, no, this value has been keep increasing. So if I say in a complete real domain of x-axis at x is equals to 1, the worth has been the maximum most, no, this has not been the case. X is equals to 1 is been a minimum, what, local minimum, no, local maximum for sure. But in an entire region of x, whether the worth of f of x has been the maximum most at x is equals to 1, no, it had been not taking place. So obviously I can say x is equals to 1 is been a local maxima, but not global, not global. I should come over here, but not global, not global. And similarly, x is equals to 2 is been a local minima, but you yourself would be able to understand the worth at x is equals to 3 is been how much? 15. If we'll talk about this coordinate at x is equals to 3, the worth is been 15. But once you'll see in an entire zone of x, no, the magnitude of f of x has also gone down 15, and even it is going towards negative side as well. So should I say the minimum most value of function f of x has been occurred at x is equals to 3? No, my dear friend, in its vicinity it has been least value, but in the entire region of where it was not the least value. But this is not a global minima. Madhu, really I could help it out what exactly I wanted to communicate. Now let me do one thing. Let me draw another curve, and definitely with the help of that curve you guys would be able to visualize the thing. What I have been doing over here, I have been taking another graph. Let me change this graph a bit, and rather taking x cube, I have taken this as a x square. Just very simple one. This one, x square. X square used to be upper facing parabola and then symmetric to the x-axis. This has been the outcome. This has been the outcome. Yes. Madhu, I would like to know from you whether this point has been an extrema or not. If it has been an extrema, whether it's been a type of maxima or minima. And if it has been a type of maxima or minima,
Obviously, it would be local minima or local maxima. If it is local maxima or local minima, can I categorize this that as a global as well? That as a global as well. So what I have been doing over here, let me take a screenshot of it. Let me take a screenshot of it, and we will be working towards working board now. Working board now. See, I have changed this problem bit. Just a minute. I have changed this problem. This one. This one. This has been the next question. And the function which we have opted for the analysis has been fx is equals to x raised to the power of 2. X raised to the power of 2. One thing has been quite sure, sir. This has been a graph. Only and only one time it had been having slope is equals to 0. If you don't understand the slope, you just start drawing a tangent. Tangent in Hindi it's been called as a sparshrekha. The rekha or the straight line which does not intersect actually, or I should say only and only it intersects only one point over the given curve. See, you can't take this as a tangent. Why? Because this has been intersecting at two different points. So what I'm saying, it should have only and only one intersection point. So obviously this has not been tangent. Even this has not been tangent because it has not been intersected at all. So if I talk about the tangent, it has been a straight line which must be just kissing the given structure. Yes. Only and only one point where the slope had become 0, and that has been x is equals to 0. That had become x is equals to 0. So if we talk about the stationary point, the function f of x do carry is stationary point. Is stationary point, and that is been at x is equals to 0. You yourself will be able to understand. Same in the same sequence, if I go ahead, the stationary point can be further bifurcated in the three different parts. Whether it could be extrema, within extrema, maxima and minima, or even it could be saddle point as well. You yourself would be able to understand what had been happening. If you'll go x is equals to 0 minus, the worth of f of x is been greater, and similarly if you'll go towards right hand side is again been greater. So yes, the worth of function at 0 is being least in its vicinity. Either you go towards left hand side, either you go towards right hand side. So may I know which kind of extrema it is going to frame? Yes, which kind of extrema it is going to frame? Obviously it is going to frame a minima. Now Madhu, I think your answer has been perfectly well. See, one thing has been quite sure, it has been making a minima in this local zone. But I would like to know from each one of you whether it has been the least most value of the function in the entire x-plane. Yes, sir, it had been. So this has been a local minima. This has been a local minima, but globally it has been a least value, so can also be qualified as a global minima as well. So Madhu, I think you can write now all of the global minima is by default a local minima. Yes, yes, sir. But all of the local minima may or may not be global minima. May or may not be global minima. Global minima, and same goes with the maxima as well. Same goes with the maxima as well. Agreed, no? So now what we have been doing mathematically, now I think it's been the right time to focus over the questions, because graphically I could understand many of the things. Like graphically I could understand x is equals to 1 is been a local maxima, and even the x is equals to 3 is been a local minima, but graphically I could understand this. But mathematically, if I follow the two process, no, first the first derivative had to get compared with 0, and then second derivative had to get to compare with 0. Definitely I can get this value as well. So what is been my process? This has been a graphical way to understand the thing, and now I would be using a mathematical approach to solve this problem out. See, mathematical approach, because in exam you will not have a math drawer with the help of which you can draw a graph. So obviously you have to go ahead mathematically. First you will be in search of stationary points. How will I do so? I will take the first derivative of this function.
what has been the function? It's been x cube minus of 6x square. Yes, I will take its differentiation. So here it becomes 3x square minus of 12 of x plus of 9. And yes, I will compare with 0. I will compare with 0 and see what I can do over here. So here 3x, 3 could have been taken as common. So here it becomes x square minus of 4x, and here it becomes plus of 3 is equals to 0. So the roots which we get, no, you can just calculate this roots. The roots is becoming, you can take a middle term split, it would become splitted in a form of x minus 1, x minus 4, and yes, roots are being 1 and 3. So this are been the stationary point. This are been the stationary point. This are been the stationary point. Now this stationary point could be maxima, minima, or even saddle point as well. So what I would do over here, I would take its double derivative. I would take its double derivative. And once we take its double derivative, my dear friend, not this one, this one. So here it becomes 6 of x minus of 12. And now it has to be checked in a different stationary point. If the value has been positive, that has been point of minima, negative, maxima, 0, saddle point, 0, saddle point. Yes, let me start with the x is equals to 1. X is equals to 1. Here 6 minus of 12, and that is been minus of 6. And similarly at 3 it becomes 18 minus of 12, that becomes plus of 6. So may I know at x is equals to 1 and x is equals to 3? Obviously, sir, x is equals to 1 would be qualified as a maxima. This would have this kind of concave, lower facing concave, and this would be this kind of concave, upper facing concave. And with the help of this graph, no, with the help of this graph, even you could have drawn this very well. What must have been your approach? You could have taken a x-axis. I have done over here. I have taken a x-axis. I have taken a y-axis. I have taken y-axis. Here comes x-axis. Here comes y-axis. I would take the reference of x is equals to 1 and x is equals to 3. So somewhere x is equals to 1 comes over here, and here x is equals to 3 do come over here. Exactly at x is equals to 1 and 3, I do not know what had been the worth of function. But one thing has been quite sure. At 1, this lower facing concave is to be created. At 3, upper facing concave is to be created. So what I have done over here, it has been like this, and we had to just connect them together. We had to just connect them together like this. Yes. And you yourself would be able to understand whether the graph is been same or not. Whether the graph is been same or not. And that has been the best analysis in mathematics you can ever do. That has been the best, most analysis in mathematics you can ever do. So whatever you have been thinking, no, you have been thinking very correct. And even if you want to know what has to be the worth or the magnitude, it is quite easy to understand actually. What you have to do? At x is equals to 1, no, you can find the worth of f of x, and x is equals to 3, no, you can find the worth of f of x. F of x has been clearly known to you, and you have to just feed the data over here. So this has been x cube minus of 6x square plus of 9x plus of 1. You had to feed x is equals to 1 over here. If you feed x is equals to 1 over here, it becomes 1. Minus of 6, that's been minus of 5. Minus of 5 plus of 9, that becomes plus of 4. Plus of 4 and that 1 becomes plus of 5. Yes or no? So you can easily get this value. You can easily 15 it has been, sorry. 15 it has been, no, 15 it has been. So again I would write 1 minus 6, that's been minus 5 plus of 9 minus minus 5 plus of 9, that becomes 4 plus 15, and that becomes 19. You yourself would be able to understand this point is been at x is equals to 1 or y is equals to 19. Y is equals to 19. Agreed, no? So I don't find any of the student would have any kind of doubt now. The same thing goes with this as well. Again, mathematical approach would be used. What I have been doing, first we will be in search of a stationary point. How do we do so? We will take the first derivative. First derivative has to get compared with 0. If we'll take the first derivative of the second degree polynomial, that is been x square, its first derivative is going to be 2x. Yes. And now with what we have been doing, we had just been comparing with 0. So we'll find the stationary point has been placed at 2x is equals to 0, virtually x is equals to 0. And yes, it had been happening. But now, which kind of stationary point it had been? For that, what we have been doing, we have just been taking a double derivative. And if we'll take the double derivative of 2 of x, the worth has been plus 2. I don't actually focus over the 2. I focus over its polarity. And the polarity has been plus, obviously, here.
minima is to be created at x is equals to 0. Do not get confused with 2, no. Just focus over this polarity and x is equals to 0. You can see very well the minima is being created. Minima is being created. So whatever you have been thinking, the same thing is going in line with the graph as well. Same thing is going in line with the graph of this as well. I would request to each one of you in daily basis, I would request to each of you in daily basis, exactly at 7:30, I would meet in our Gate Academy global channel, and we will spend around 1 hour, and definitely next 30 to 40 days I would try to complete almost all important topics within the engineering mathematics. But I expect you guys are been showing your keen as well as presence. Yes, daily basis 7:30, and 1 hour lecture we are going to have over here. Could you really understood what exactly I wanted to communicate? Yes, no? Madhu, could you really understood what exactly I wanted to communicate through these questions? So, okay, I would request to each one of you, be regular in this part of session. Definitely you will conquer the mathematics. There is no doubt as such. There is no doubt as such. So what I am going to do, I'm just going to close down here itself. The student who have been from electronic side, they can just shift to the main channel. There the main channel I would be teaching EMFT. Madhu, okay. Sir, I have a doubt in a control system which you have taught in a Gate Academy. How to find time constant in first order? No. Until and unless few data are not been given over the graph, definitely you won't be able to find it. You won't be able to find it. Either there must be a slope at t is equals to 0. Either the maximum magnitude, there's certain clues must be given. So you can do one thing, no, you can join our Telegram group. What I'm saying, you can join our Telegram group, and in Telegram group we are going to have one-to-one interaction as well. So definitely, so the Telegram group is been t.me, that is stands for, that is been t.me me, and here comes GA1111 core, and here comes trio underscore EC. You can just join this out. So how was your class? I would like to have the input from each one of you. And tomorrow probably I would bind up the complete concept of maxima and minima. But I want the maximum to maximum strength here. See, such an intense work has been done. I would try to plot almost all of the important functions so that you'll have not only mathematical understanding, even the graphical understanding as well. And even I have brought the PDF as well, so that all of the important concepts would be shown over the PDF itself. See, all of the important component would be shown over the PDF itself. But I would like to write few of the things so that the connectivity would be more. So this is what the today's class. We will meet tomorrow with the same agenda, and then we'll extend forward the maximum and minimum. Bye bye. Take care.
हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी और अनअकैडमी। और आज की क्लास में स्कैटरिंग पैरामीटर ओवर होने जा रहा है। लास्ट क्लास में ऑलरेडी मैंने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्कैटरिंग पैरामीटर को डिटेल में डील किया, और क्लास में रेगुलर रहोगे तो ज्यादा एंजॉय कर पाओगे। कुछ बच्चे स्पोरेडिकली आते हैं और उन बस बर्ड जैसे होता है ना, बर्ड जो है छत में बैठा और उड़ गया, अब उनको चाहिए पूरा का पूरा लुक एंड फील, बोले ईएमएफटी निपटा लोगे, निपट जाओगे। ईएमएफटी निपटाने की बात तो बहुत दूर है, तो थोड़ा सा सावधानी के साथ क्या है, गेट में कैसे अच्छा स्कोर करें। मैं देख रहा हूँ कि केवल मैसेज ये आ रहा है कि सर 2 महीने में गेट में कैसा अच्छा स्कोर करें, 3 महीने में कैसे अच्छा स्कोर करें। भाई ईएमएफटी जैसे ऐसे सब्जेक्ट हैं कि तुमको इतना कोइंसाइज करके पढ़ाया जा रहा है, 2-2 महीने में पूरा का पूरा सब्जेक्ट खत्म नहीं होता, तुमको 2 महीने में अच्छा स्कोर करना है। भाई थोड़ा सा मेरी नहीं, आपके बीटेक की नहीं तो कम से कम सब्जेक्ट की इज्जत कर लो मेरे भाई। इतने हल्के में सब्जेक्ट्स नहीं है। अगर आप ये सोच रहे होगे कभी भी उड़ते हुए चिड़िया के जैसे किसी छत के ऊपर बैठ गए और पूरा का पूरा सब्जेक्ट को अक्वायर कर लोगे, तो नहीं होगा भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज के हिसाब से भी आप लोग तैयारी करो। देखो, आज की क्लास का एजेंडा मैं एकदम क्लियर रख रहा हूं। स्कैटरिंग पैरामीटर के 4 से 5 न्यूमेरिकल्स जो गेट में आए थे, वो आज की क्लास में स्मैश करने वाले हैं, और यही आज की क्लास का एजेंडा भी होगा। क्यों? क्योंकि अगली क्लास से हम चालू करेंगे एक नया टॉपिक। चाहे मैं वेव गाइड स्टार्ट करूंगा या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन इन 3D स्पेस स्टार्ट करूंगा, दोनों में से एक कोई सा टॉपिक जो है वो अगली क्लास बोले तो कल एग्जैक्टली सेम टाइम 9 बजे चालू होने वाली है। ठीक है सर, चलिए इसी सीक्वेंस में सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं गेट इलेक्ट्रॉनिक्स 2007 का। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं लेके जाता हूं वर्किंग बोर्ड की तरफ, और वहां ही इस क्वेश्चन को अच्छे से स्मैश करने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये रहा आप लोगों का अगला क्वेश्चन या फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। बताएं इस क्वेश्चन का बेहतरीन आंसर क्या होगा। और किसी बच्चे को अगर इस क्वेश्चन से मुठभेड़ करना हो तो टेलीग्राम आप मेरे हिसाब से ज्वाइन कर चुके होंगे ऑलरेडी। ट्रांसमिशन लाइन के नाम से एक पीडीएफ डला हुआ है, आप सर्च कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ये करीबन मैंने 8 से 10 दिन पहले ऑलरेडी डाउनलोड करा दिया है आप लोगों को। ठीक है, देखो भैया, और अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में लिया हुआ है, जहां आपने एक इंपिडेंस जेड को शंट में कनेक्ट किया था, जिसको मैंने शंट एलिमेंट के नाम से पूरा का पूरा डेरिवेशन परफॉर्म किया हो। आप चाहें तो उस एस मैट्रिक्स का रेफरेंस ले लें और वहां से सीधे सीधे डेटा फीड करें जेड नॉट और जेड का। अदरवाइज मैं ये बोलता हूं कि गेट कभी भी फॉर्मूला को याद करके जाने का तो नाम है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप 65 में से 2 या 3 क्वेश्चन शायद फॉर्मूला ओरिएंटेड बना लें, बट बाकी पूरे के पूरे 60 से 62 क्वेश्चन जो हैं वो एप्टीट्यूड से ही बनेंगे। आपको फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला के पीछे का एक प्रोसेस पता होगा, और उस प्रोसेस से क्वेश्चन जो है छोटे छोटे पूछे जाएंगे। बहुत डिफिकल्ट तो नहीं होते, लेकिन प्रोसेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि थ्योरी से। बताएं इसका आंसर क्या होगा। अंकित का आंसर आ चुका है सी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो अंकित का आंसर आ चुका है सी। एनीवन एल्स? देखो भैया, लास्ट क्लास में अगर आप लोगों ने क्लास अटेंड की होगी तो आपने पाया जब भी आपके पास 2 पोर्ट होते हैं तब आपका एस पैरामीटर 2x2 का होता है। आप देख सकते हैं 2 पोर्ट है, लेट्स टेक दिस इज बीन द पोर्ट 1 एंड दिस इज बीन द पोर्ट 2, तो आपका एस पैरामीटर जो है वो 2x2 का ही होगा। दैट मीन्स टोटल 4 एलिमेंट होने वाले हैं, 2 रोज में और 2 कॉलम्स में। ये होगा S11 एंड हियर कम्स S12, S21 और S22। ठीक, आप इस प्रॉब्लम की एक ब्यूटी देखे या नहीं देखे, सब के सब ऑप्शंस में S11 की वैल्यूज आर बीन डिफरेंट। यस और नो? यस सर। तो इस प्रॉब्लम में आपसे पूछा ही नहीं गया है कि पूरा का पूरा मैट्रिक्स निकाल के दो, आपसे पूछा गया है कि S11 निकाल के दो। तो ये तो कॉमन एप्टीट्यूड है। अगर आप ये बोलोगे कि नहीं सर ये तो मेरे को ध्यान नहीं आया, तो ठीक है ना, अभी भी टाइम बचा हुआ है, अभी भी मॉक टेस्ट बचे हुए हैं, तो आप ये कंसेप्ट को या फिर इस तरीके के अप्रोच को धीरे धीरे डेवलप करो। आपसे पूछा ही नहीं गया पूरा का पूरा एस पैरामीटर, ऑल्दो हम पूरा का पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, बट गेट में 3 घंटे के टाइम पे तो हम नहीं करने वाले ना ये सब चीज। तो आप केवल केवल S11 पे फोकस करते हैं। S11 जो होता है वो इनपुट साइड का रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होता है, अगर आप V2 प्लस को 0 इंश्योर करके चलें। आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, लास्ट क्लास में देखा हुआ है, S11 इज बीन V1 माइनस ओवर V1 प्लस व्हेन द वैल्यू ऑफ V2 प्लस इज इक्वल्स टू 0। इस सर्किट पे मार्क करता हूं, इनपुट पोर्ट में आने वाला वोल्टेज वेव, आने वाले वेव को मैं प्लस से रिफर कर रहा हूं, और चूंकि ये पोर्ट 1 है तो मैंने V1 प्लस लिखा है। रिफ्लेक्ट होके जाने वाले वोल्टेज कंपोनेंट को मैं माइनस से रिफर कर रहा हूं, चूंकि पोर्ट 1 है तो मैं इसको V1 माइनस लिख रहा हूं। एंड सेम गोस विद द पोर्ट 2 एज वेल। तो ये होगा आने वाला कंपोनेंट इस पोर्ट पे, पोर्ट 2 से V2 प्लस, और जाने वाला V2 माइनस।
वैसे S1 के कैलकुलेशन के दौरान ये चीज तो पक्का है कि आपको V2 प्लस को जीरो इंश्योर करना है। V2 प्लस जीरो कैसे इंश्योर होगा, तो देखो हो क्या रहा है, V2 माइनस लोड के लिए इंसिडेंट कंपोनेंट है, ये बात अलग है कि इस पूरे के पूरे टू पोर्ट के लिए ये रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट है, लेकिन लोड के लिए तो इंसिडेंट कंपोनेंट है। लेड का सॉरी V2 माइनस का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होकर V2 प्लस बन रहा है। हाँ सर, कायदे की बात तो वो कर ही रहे हैं आप। तो V2 माइनस का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होकर V2 प्लस बन रहा है, और इस प्रॉब्लम में V2 प्लस को जीरो इंश्योर करना था। तो एक ही तरीका है कि लोड को आप मैच कर दें ट्रांसमिशन लाइन से। तो मैं ये बोलूं आपके डिजायर्ड रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट लोड जो होता है ZL माइनस ऑफ Z नॉट डिवाइडेड बाय ऑफ ZL प्लस ऑफ Z नॉट को जीरो इंश्योर करें। और एक्चुअल में रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट लोड क्या होगा, आने वाला कंपोनेंट रिफ्लेक्ट होके जाने वाला कंपोनेंट, आने वाला कंपोनेंट क्या है मेरे भाई V2 माइनस, और जाने वाला कंपोनेंट क्या है V2 प्लस, तो ये होगा रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट V2 प्लस V2 माइनस। आपको इंश्योर क्या करना है मेरे भाई, बस क्लियर रखो, आपको इंश्योर करना है V2 प्लस की वैल्यू जीरो, और V2 प्लस की वैल्यू को जीरो इंश्योर करते करते आप टाफ L को जीरो कर लो, और टाफ L को जीरो करने के लिए ZL लोड इंपिडेंस को आंख बंद करके कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस से रिप्लेस कर दे। यस नो, ठीक, क्लियर है यहां पर। तो सेम प्रोसेस इज बीन फॉलोड ओवर हियर, सो व्हाट वी हैव बीन डूइंग ओवर हियर माय डियर फ्रेंड्स, so let me extend a bit। ये कुछ इस तरीके का हुआ, यहां मैं लोड लूंगा, और यहां लोड इंपिडेंस जो होने वाला है ZL इट इज गोइंग टू बी Z नॉट एंड दैट इज बीन 50 ओम। और इस प्रॉब्लम की ब्यूटी ये थी, ना तो लोड इंपिडेंस और ना ही कैरेक्टरिस्टिक इंपिडेंस कहीं भी कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, तो कैलकुलेशन जो है वो रजिस्ट्री या रियल डोमेन में होने वाला है, तो कैलकुलेशन वैसे ही आसान हुआ। लेकिन जैसे ही आपने ZL को 50 ओम से मैच कराया, तो आप पा रहे हैं कि V2 प्लस का कंपोनेंट खत्म ही हो गया है। तो अब एटलीस्ट इस सिचुएशन में यू कुड हैव रब दिस V2 प्लस आउट, ये आप इसको रब आउट कर सकते थे। अभी भी बोल रहा हूं आपको V1 माइनस और V1 प्लस का रेशियो चाहिए। तो आप ये बताएंगे ना, इस टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, इस टर्मिनल, ये दो टर्मिनल जो है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ये होगा क्या, V2 होगा। और V2 होता क्या है, V2 इंसिडेंट कंपोनेंट और रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट का सम होता है, ये V2 प्लस V2 माइनस। और इस प्रॉब्लम में तो V2 प्लस वैसे ही जीरो है, तो आप इसको लिख सकते हैं V2 माइनस, V2 माइनस। अब ध्यान दें, ये V2 लोड के अक्रॉस वोल्टेज तो था ही, लेकिन ऑल द वे ZL जो है वो 50 ओम के पैरेलल है, और 50 ओम जो है वो इनपुट टर्मिनल के पैरेलल है, या इनपुट पोर्ट के पैरेलल है। तो ऑल द वे इस वोल्टेज को आप यहां लेके जा सकते थे और यहां लेके आ सकते थे। तो वर्चुअली स्पीकिंग मेरे को ये समझ में आया साहब कि आप V2 माइनस बोल लें या V2 बोल लें, इट्स बीन कंप्लीटली योर चॉइस। V2 माइनस, V2 माइनस, देखो 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 देखो, V2 माइनस इज इक्वल्स टू ऑफ V1, और V1 है मेरे भाई V1 माइनस प्लस ऑफ V1 प्लस। यस सुनो, यस सुनो। देखो एक तरीका तो और था, दूसरा तरीका क्या था भाई, अपने को ज्यादा सोचने की नीड नहीं है। देखो क्या है, अब आप ये कंडीशन को मीट करने के लिए लोड ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं, लोड ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं, तो ये 50 ओम जो है इस 50 ओम के पैरेलल में आ गया है। तो आप ये बताएंगे ना यार, रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट वर्सेस इंसिडेंट कंपोनेंट अगर निकाल रहे हैं तो क्या निकाल रहे हैं आप, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ही तो निकाल रहे हैं। कहां पर, सोर्स पे, और वो भी कब, जब V2 प्लस की वैल्यू जीरो हो। और वो कैसे इंश्योर किया आपने, आपने लोड को कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस से मैच कर दिया। सो व्हाट यूज्ड टू बी द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, इफेक्टिव लोड कितना होगा, 50 और 50 पैरेलल में आ रहा है, ZL माइनस ऑफ Z नॉट फिर से कितना है 50 डिवाइडेड बाय ऑफ इफेक्टिव लोड, और यही अब क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। So virtually speaking it has been 25 minus of 50 divided by of 25 plus of 50, ऊपर में हो गया minus of 25 और नीचे हो गया 75, और ये हो गया वैल्यू minus of 1/3। So yes, C तो देख के समझ में आ रहा है minus 1/3, ठीक है। यस 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 यस, और मैंने ये भी बताया था ये दोनों के दोनों मैच कर जाएंगे। बाकी लोग बच्चे एक कम करो, अंजलि एंड अंकित फटाफट आप लोग एक कम करो ना, Z21 भी निकाल लो ना। Z21 निकालने का भी सेम पैटर्न है, बिल्कुल सेम पैटर्न है। Z21 में रेशियो लेने वाले हैं आप V2 माइनस डिवाइडेड बाय ऑफ V1 प्लस का, और यहां भी V2 प्लस को आप जीरो इंश्योर करके रख रहे हैं। बोले तो इफेक्टिवली अभी भी लोड को आप Z नॉट के बराबर ही रखेंगे, V2 माइनस ऑफ V1 प्लस, V2 माइनस ऑफ V1 प्लस, ये कुछ इस तरीके का ये।
तो V2 माइनस ऑफ V1 प्लस निकालना काफी आसान था, अगर थोड़ा सावधानी के साथ देखें तो V2 माइनस क्या था, पूरा का पूरा V2 था। और आपने एक चीज ध्यान दिया, ऑल द वे V2 माइनस का पीछे 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 लेके जाएंगे ना, तो V2 माइनस जो है वो V1 के बराबर हो चुका है। अरे कितने लोग अग्री करोगे, थोड़ा सा सावधानी के साथ कैलकुलेशन करना। अगर आप थोड़ा सा भी एप्टीट्यूडल माइंड लगाते हैं तो इस क्वेश्चन को आसानी से क्रैक कर लेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ऑल द वे ये वोल्टेज इसके अक्रॉस आया और ये इसके अक्रॉस आया, और यहां वोल्टेज क्या था, V1। V1 क्या था, V1 प्लस और V1 माइनस का रेशियो था, बस ऐसे ही है ये। अब बताएं V1 को क्या लिख सकते थे, V1 प्लस प्लस ऑफ V1 माइनस, V1 प्लस V1 माइनस डिवाइडेड बाई ऑफ V1 प्लस। रेशियो लेंगे तो क्या हो गया, 1 प्लस V1 प्लस सॉरी V1 माइनस डिवाइडेड बाई ऑफ V1 प्लस। और ये वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखी है सेम ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट के साथ। व्हाट इट वाज -1/3, और ये वैल्यू निकल के आ रही है 2/3। देख सकते हैं, दिस इज बीन द आंसर, दिस इज बीन द आंसर। ये सब लोगों को क्लियर है अंकित? मेरे हिसाब से ये सब लोगों को क्लियर होगा, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो एटलीस्ट इस कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं है। चलिए इसी सीक्वेंस में आई थिंक इज बीन द राइट टाइम, आई शुड आल्सो बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल। यहां से एक अगला क्वेश्चन भी उठा लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 44th। अच्छे से रीड करें और बताएं कि किस कैटेगरी के ट्रांसमिशन लाइन से या माइक्रोवेव लिंक से आप डील कर रहे हैं। आपका गिवन सिस्टम लॉसलेस है, रेसिप्रोकल है, या पार्शियली लॉसलेस है, नॉन रेसिप्रोकल है। सो 4 डिफरेंट ऑप्शंस आर बीइंग कैटर्ड अलोंग विद दिस प्रॉब्लम। तो डेटा जो सप्लाई किया गया है वो फिर से एस पैरामीटर सप्लाई किया गया, और देख के समझ में आ रहा है, वैसे दिया है प्रॉब्लम में कि 2 पोर्ट है, और अगर ये 2x2 का है, सो द नंबर ऑफ पोर्ट्स विच आर बीन इन्वॉल्व विथ द गिवन ट्रांसमिशन लाइन और माइक्रोवेव लिंक इज बीन n×n। अगर 2 पोर्ट होगा तो 2x2 होगा, 3 होगा तो 3x3 होगा। इन जनरल n×n का नेटवर्क होगा, n×n का नेटवर्क होगा। बताए अंकित, ग्रेट 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 अंकित, आंसर इतना जल्दी आ रहा है मतलब कि डेफिनेटली घर में मेहनत कर रहे हो। वापस से चले जाता हूं मैं पुरानी इतिहास में, फोकस करता हूं मैं रेसिप्रोसिटी पे। अगर आपका गिवन एस मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक इन नेचर रहा, वर्चुअली स्पीकिंग, इफ यू टेक द ट्रांसपोज ऑफ द एस मैट्रिक्स एंड इफ इट इज बीन फाउंड टू बी एस, बाय डिफॉल्ट जो आपका नेटवर्क होगा जिसके लिए आपने एस मैट्रिक्स से एस पैरामीटर निकाला है वो होने वाला है रेसिप्रोकल। तो आप देखें ना, एस ट्रांसपोज में होगा क्या, केवल ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। ये यहां चला गया और ये यहां चला गया, तो एक्चुअली में अभी भी एग्जिस्टिंग न्यू मैट्रिक्स इज बीन सेम। तो एस ट्रांसपोज करते हैं तो यहां तो ये वैल्यू तो नहीं हिलने वाले है ना, 0.2 विद इन एंगल ऑफ 0, और ये होगा 0.1 विद इन एंगल ऑफ 90 डिग्री, और ये आपस में स्वैप भी हो गया तो अपनी जगह में सेम ही रहेंगे। ये देखो 90 डिग्री और 90 डिग्री, ये देखो विथ द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो यहां से एक चीज तो समझ में आ गया कि एस ट्रांसपोज जो है वो एस के बराबर है, तो नेटवर्क रेसिप्रोकल तो है, इट इज बीन अ रेसिप्रोकल नेटवर्क। और अगर रेसिप्रोकल है तो नॉन रेसिप्रोकल वाले सब कंपोनेंट्स को बाहर निकालना है। ये बी और डी तो आउट हो गए, मतलब कि बी और डी अगर कोई भी आंसर दे रहा है तो वो गुनाह है। गिवन सिस्टम लॉसी है, लॉसलेस है, इसके लिए कहानी ऑलरेडी क्राफ्ट की गई थी। इसके लिए मैं आप लोगों को आउटकम दिखा देता हूं जो मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है। देखो ये मैग्नीट्यूड ऑफ S11 रेज टू द पावर ऑफ 2 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ S21 रेज टू द पावर ऑफ 2। अगर इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 आया और कुछ 3 कंडीशंस और मीट हुए तो डेफिनेटली आपका सिस्टम जो होगा वो लॉसलेस होगा। लेकिन 4 में से अगर एक भी कंडीशन मीट नहीं होती डेफिनेटली इट वुड गो इनटू द लॉसी कंडीशन। बस इसी को फॉलो कर रहे हैं। देखें अपन मैग्नीट्यूड निकालेंगे 0.2 विद एन एंगल ऑफ 0, 0.9 विद एन एंगल ऑफ 0। So yes, my basic focus would be magnitude of S11 raised to the power of 2, S21 raised to the power of 2, and that has to be 1। चलिए 0.2 with an angle of 0, मैग्नीट्यूड कितना होने वाला 0.2, 0.2 का पावर 2, एंड सिमिलरली 0.9 का पावर 2। अपन चेक करते हैं कि वैल्यू जो है वो 1 आ रही है कि नहीं आ रही है, देख लेते हैं। ये होगा 0.2 का स्क्वायर, कहाँ गया, प्लस ऑफ 0.9 का स्क्वायर। ये
ये वैल्यू आ रही है 0.85, 0.85। ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू 1 नहीं है, ये वैल्यू 1 नहीं है। यस, दिस इज नॉट बिन 1। तो आप भूल जाए कि ये एक लॉसलेस नेटवर्क है। तो क्या होने वाला है, reciprocal but lossy in nature. C has been the best most answer. C has been the best most answer. चलो ग्रेट 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 ग्रेट। देखो मैं एक चीज और भी समझा रहा हूं आप लोगों को, पहले भी इस चीज का हिंट दे चुका हूं कि आपके पास एस मैट्रिक्स जो आने वाला है ये हमेशा रियल क्वांटिटीज कैरी नहीं करेगा, ये प्योर इमेजिनरी भी हो सकता है, इट कुड बी द कॉम्प्लेक्स फॉर्म एज वेल। देखो यहां तो मैंने पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है, देखो 0.2 विद एन एंगल ऑफ 0, एनीवेज r विद एन एंगल ऑफ थीटा, इसी को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा सकता है r e टू द पावर ऑफ j थीटा, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है r cos थीटा प्लस ऑफ आयोटा r sin थीटा, आयोटा r sin थीटा। चलिए S11 पे फोकस करते हैं। तो r की वैल्यू है 0.2 और थीटा की वैल्यू है 0, तो cos 0 जो होने वाला है वो 1 होने वाला है, बट sin 0 जो है वो 0 होने वाला है। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में 0.2 को लिखता हूं तो ये केवल केवल होने वाला है 0.2। सेम गोस विद 0.9 एज वेल। देखिए 0.9 ये r की वैल्यू 0.9 यहाँ आएगी, 0.9 यहाँ आएगी, लेकिन cos जैसे ही 90 फीड करेंगे ये 0 हो चुका होगा और एक केवल कितनी आने वाली है, आयोटा ऑफ 0.9। समझिएगा इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूँ। सेम गोस विद दिस एज वेल एज दिस, 0.9 और ये वैल्यू आएगी 0.1, है ना। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा और भी कनेक्टिंग फील हो रहा होगा। तो कल के दिन आप स्कैटरिंग मैट्रिक्स में ये एक्सपेक्ट ना करें कि हमेशा रियल नंबर्स के साथ डील करेंगे, आप कॉम्प्लेक्स और इवन प्योर इमेजिनरी कंपोनेंट्स के साथ भी डील कर सकते हैं। दिस इज बीन द आउटकम एज वेल। थोड़ा ध्यान देंगे, इसलिए जो अपन ने मैग्नीट्यूड वगैरह लिया है ना ये रिलेवेंट भी लगता है। ये जो मैग्नीट्यूड लिया ना आप लोगों ने, दिखा देता हूं मैं थोड़ा सा, ये जो आप लोगों ने मैग्नीट्यूड लिया कहाँ गया, ये आप लोगों ने जो मैग्नीट्यूड वगैरह लिया ना वो रिलेवेंट भी लगता है। ये केवल माइनस को प्लस करने के लिए नहीं है, आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ नंबर्स भी होंगे, उसका आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे। यस, चलिए अगला क्वेश्चन फिर से लेता हूं मैं आप लोगों के वर्कबुक से। चलिए ये हुआ एंड हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को लगता है ये एक ऐसा क्वेश्चन जो अगर पढ़ने से शायद बच्चों को समझ में ना आए। क्वेश्चन नंबर 45 को आप लोग फटाफट ट्राई करेंगे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये आप लोगों को ही करना है। और जो बच्चे कल की क्लास अटेंड किए होंगे डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आसानी से निपटा लेंगे। थोड़ा सावधानी के साथ प्रॉब्लम को पढ़ना और उसके बाद ही आगे बढ़ना, उसके बिना दिक्कत में आ जाओगे। ये रीड द प्रॉब्लम केयरफुली एंड टेल मी व्हाट कुड हैव बीन द बेस्ट मोस्ट आंसर। ये रिसेंट ईयर का प्रॉब्लम है, मतलब कि 10 साल पुराना, 10 से 8 साल पुराना, गेट इलेक्ट्रॉनिक्स 2014 का एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए प्रॉब्लम में लिखा क्या हुआ है, अ टू पोर्ट नेटवर्क हैज स्कैटरिंग पैरामीटर। ठीक है, एक टू पोर्ट है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ पोर्ट n की वैल्यू 2 है, तो स्कैटरिंग मैट्रिक्स जो होगा वो 2x2 का होगा। इफ द टू पोर्ट ऑफ द टू पोर्ट इज शॉर्ट सर्किटेड, तो आपका जो पोर्ट 2 है उसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। ठीक है, जनरली लोड साइड को मैं पोर्ट 2 लेके चलता हूं, उसको आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। Then S11 compare with the resultant one port network is, आपके 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपके 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप फटाफट इस क्वेश्चंस को पहले समझने की कोशिश करें और उसके बाद क्रैक करने की कोशिश हम करेंगे। देखिए प्रॉब्लम समझते हैं पहले, क्या है प्रॉब्लम, बताएगा कोई मेरे को क्या होगा इसका आंसर। देखिए आपके पास एक ऑलरेडी टू पोर्ट नेटवर्क था, दिस वॉज अ टू पोर्ट नेटवर्क, ये कुछ इस तरीके से, दिस वॉज अ टू पोर्ट नेटवर्क। ये आप लोगों का टू पोर्ट नेटवर्क था। टू पोर्ट नेटवर्क डेफिनेटली इसके एस पैरामीटर से डिफाइंड होगा, वो भी प्रॉब्लम में क्लियरली दिया हुआ है, एंड दैट हैड बीन S11, S12, S21 और S22। ठीक है, यहाँ इंसिडेंट वोल्टेज वेव रहा होगा, रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। इन पोर्ट 1 यूज होगा और पोर्ट 2 में 2 यूज होगा। यहां तक तो सब सही है, लेकिन है क्या,
भाई ने एक चेंज इंट्रोड्यूस किया इस पूरे के पूरे सिस्टम में, लोड को उठा के कर दिया शॉर्ट सर्किटेड। इसका मतलब किसी एक कंडक्टिंग पाथ से दोनों टर्मिनल को आपस में जोड़ दिया है, और अब आपके पास इफेक्टिवली केवल एक पोर्ट बचा, वो भी इनपुट साइड का। और अगर केवल एक पोर्ट बचा है तो अब नया स्कैटरिंग मैट्रिक्स जो होने वाला है वो n क्रॉस n, बोले तो 1 क्रॉस 1 का होने वाला है। तो अब आप इसको इफेक्टिवली वन पोर्ट मान के चल रहे हैं, इफेक्टिवली वन पोर्ट और सिंगल पोर्ट। तो आपका स्कैटरिंग मैट्रिक्स वुड बी इन ऑर्डर ऑफ 1 क्रॉस 1। तो इसके पास केवल एक एलिमेंट होगा, दैट इज बीन S11, और प्रॉब्लम में वही कैलकुलेट करने पूछा है, प्रॉब्लम में वही कैलकुलेट करने पूछा है। यस और नो? यस सर। बताएं कैसे कैलकुलेट करेंगे, बड़ा आसान था अगर थोड़ा भी कैलकुलेशन करना अपने को आता है। देखें, सबसे पहले मैं इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वोल्टेजेस लिखना चालू करता हूं। लेट्स टेक दिस इज बीन माय पोर्ट 1 and the output side has been a port 2. Incident voltage wave in port 1 is being taken as it is been port 1, I would write this as a V1, and as it is been incident I would be writing as plus. तो plus का मतलब incident component है इस two port block के लिए, and same comes the reflected part, V1 minus. Same goes the incident component in port 2 and that is been V2 because it is been port 2, और incident है तो इसके लिए मैं प्लस लिख रहा हूँ, एंड इस पोर्ट से बाहर जाता हुआ रिफ्लेक्ट होकर बाहर जाता हुआ कंपोनेंट जो है वो V2 माइनस है, V2 माइनस है। इस प्रॉब्लम की एक खूबसूरती रही है कि लोड को आपने कर दिया शॉर्ट सर्किट। अगर लोड को शॉर्ट सर्किट कर दिया है तो यहाँ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट टा एट लोड दैट यूज्ड टू बी ZL माइनस ऑफ Z0 डिवाइडेड बाय ऑफ ZL प्लस ऑफ Z0, एंड ZL इज बीन केप्ट एज 0। और एक प्रॉब्लम की इस प्रॉब्लम की बात ये रही कि अगर ZL को आप 0 डालते हैं, irrespective of the value of ZL, it becomes minus of Z0 divided by Z0, and that has been precisely minus of 1. तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट लोड जो है वो माइनस ऑफ 1 है। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होता क्या है? इट इज बीन द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट ओवर द इंसिडेंट कंपोनेंट। तो लोड से ध्यान देना, आई रिपीट, लोड से रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट क्या है? V2 प्लस, और इंसिडेंट कंपोनेंट क्या है? V2 माइनस है। सो माइनस 1 जो है इट वुड बी रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट, लोड से रिफ्लेक्ट होके जाने वाला कंपोनेंट है V2 प्लस, एंड सिमिलरली हियर इट इज बीन V2 माइनस। तो आपने अगर लोड को शॉर्ट सर्किट किया है तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप निकल के आया है, V2 माइनस और V2 प्लस के बीच में वो एक दूसरे से 180 डिग्री फेस शिफ्टेड फॉर्म में होंगे, और V2 माइनस इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ V2 प्लस, माइनस टाइम्स ऑफ V2 प्लस। यस सुनो, आपको S11 निकालना है। एक काम करते हैं ना, वापिस से आते हैं मैथमेटिक्स में। V1 minus is equals to S11, and here comes V1 plus S12 V2 plus, and here comes V2 minus is equals to S21 V1 plus S22 V2 plus, हाँ कि नहीं? V2 plus, यस सर। ये कुछ इस तरीके से देखिए, अब आपको निकालना क्या है, बस इस पे फोकस करें। S11 निकालना है, और S11 भी किस केस के लिए निकालना है ये क्लियर रखेंगे, जब आपका लोड शॉर्ट सर्किट हो चुका है। और जब आपका लोड शॉर्ट सर्किट हुआ है तो आपने ऑलरेडी देख रखा है कि V2 प्लस जो है वो V2 माइनस के बराबर हो चुका है, V2 प्लस जो है वो V2 माइनस के बराबर हो चुका है। और अभी आपको रेशियो जो निकालना है वो निकालना है V1 माइनस और V1 प्लस के बीच में। कैसे ही करोगे ये बताओ मेरे को। देखो, तो ओवरऑल वर्चुअली मेरे को देख के यही समझ में आया कि सर दोनों इक्वेशंस में केवल V1 माइनस और V1 प्लस ही रखने हैं, और लास्ट में इनका रेशियो जो है वो S11 निकाल देगा, बट बाकी जो टर्म्स हैं वो अनवांटेड है। तो एक काम करते हैं ना, वापस से रिक्राफ्ट करते हैं इस पूरे के पूरे इक्वेशन को। V1 माइनस इज इक्वल्स टू S11 V1 प्लस, दैट इज क्वाइट ओपन, एंड या तो मैं केवल V2 प्लस रखूं या केवल V2 माइनस रखूं, इट्स बीन कंप्लीटली अप टू अस। एक काम करते हैं, इसको मैं S12 V2 प्लस ही रखता हूं, ये देखो, ठीक। अब एक काम करता हूं, तो अब इसको V2 माइनस को V2 प्लस कर लेता हूं, लेकिन यहां आएगा माइनस साइन, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। यस सर, इज इक्वल्स टू S21 V1 प्लस प्लस ऑफ S22 V2 प्लस। यस सुनो, एक काम करें, इस टर्म को आप लेफ्ट की तरफ लेके जाए, V2 प्लस जो है वो बाहर की तरफ निकलेगा, बचेगा क्या आपके पास? 1 प्लस S22, एंड माइनस साइन जो है वो अभी भी बाहर की तरफ होगा, एंड हियर इट बिकम्स S21 V1 प्लस V1 प्लस। यस सुनो, यस सर। तो यहां से एक काम करते हैं ना अपन, केवल एक काम करेंगे, यहां पूरे के पूरे कैलकुलेशन में V2 प्लस जो है निकाल के यहां फीड कर देंगे, और मेरा पूरा कैलकुलेशन हो चुका होगा। तो ये होगा V2 प्लस इज इक्वल्स टू S21 डिवाइडेड बाय ऑफ 1 प्लस S22
S22 इंटू इंटू V1 प्लस, और यहां आएगा केवल एक माइनस साइन। ये क्लियर है? ये डेटा यहां डाला। यार एक चीज ध्यान देना, अगर कभी भी किसी क्वेश्चन को क्रैक कर रहे हो तो एप्टीट्यूडल माइंड तो लगाओ कि मैं क्यों ही कर रहा हूं। मतलब कोई बच्चा ये पूछेगी सर मेरे को क्लिक नहीं करता क्वेश्चन, अरे क्लिक नहीं करता तो बैठ के तुम ये तो दिमाग लगाओगे कि तुमको पहुंचना कहाँ है। भाई एक चीज बताओ मेरे को, अगर हावड़ा जाना है तो तुम डाउन लिंक का ट्रेन पकड़ोगे चांपा से कोरबा से, और अगर महाराष्ट्र जाना है तो अप लिंक का। आपको ये बोलेगी सर हमको समझे में नहीं आता। अरे तो समझ का मतलब ये थोड़ी ना है कि तेरे को एक एक स्टेशन बीच का पता होना है, लेकिन तेरे को पाथ तो पता होना चाहिए। देखो पाथ था क्या, V1 माइनस और V1 प्लस का रेशियो चाहिए था। V2 प्लस जो था अनवांटेड था, लेकिन V2 प्लस को V2 माइनस से कनेक्ट करना मेरे को आता था। तो इस इक्वेशन में V2 प्लस और V2 माइनस को कनेक्ट करके मैं अगर V2 प्लस को या तो V1 प्लस या V1 माइनस का फंक्शन बना लिया तो इस इक्वेशन में चाहिए यही था। हर एक टर्म के पास या तो V1 प्लस हो या V1 माइनस हो और मेरा गेम खत्म। बस यही कर रहा हूं मैं। तो यही प्रोसेस को मैं आगे फॉलो करता हूं। चलिए आगे फॉलो कर लेता हूं इसी प्रोसेस को। तो यहां अगर आगे इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं अपन, देखिए अगर आगे फॉलो कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ये V1 माइनस इज इक्वल्स टू S11 V1 प्लस एंड देन हियर कम्स माइनस, ये ऑलरेडी निकाल रखा है आपने, माइनस ऑफ S21 डिवाइडेड बाय ऑफ 1 प्लस S22 एंड हियर कम्स V1 प्लस। V1 प्लस अब दोनों से कॉमन है, आप बाहर निकालें इसको शांति के साथ और अब इसका रेशियो ले लें। और जब आप रेशियो लेंगे यू गेट द आंसर एज वेल। V1 माइनस V1 प्लस इज इक्वल्स टू S11 माइनस ऑफ S21 डिवाइडेड बाय ऑफ 1 प्लस S22। ये देखने में शायद बड़ा क्वेश्चन लगा होगा, लेकिन अगर खुद से कंसेप्चुअली क्लैरिटी के साथ अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। यस, सो मे नो व्हाट वुड बी द बेस्ट मोस्ट आंसर। देख लो अब इसमें से बेस्ट मोस्ट आंसर क्या होगा। आपस में मल्टीप्लीकेशन भी कर लो, एलसीएम ले लो, तो नीचे आएगा 1 प्लस S over 2 as it gets multiplied. It has been S11 then S11 into S22 minus of S21 S21। देख लो, है ना? इसमें कहीं मिस्टेक हुआ है मेरे को जहां तक कि पता है, देख लेना इसमें ऑप्शंस में कहीं मिस्टेक हुआ है। ये होगा आप लोगों का बेस्ट मोस्ट आंसर। दिस इज बीन द बेस्ट मोस्ट आंसर। ये यस, ठीक है। ये क्या आ रहा है आंसर, ये बताएंगे मेरे को। 45 का बी आ रहा है क्या, अगर चेक करो। अंकित चेक करो एक बार, 45 का बी आ रहा है क्या, देख लेते हैं। अच्छा आ रहा है लग रहा है मेरे को ये। S11 आ गया, S11 आ गया, S11 S22 आ गया, माइनस ऑफ S12 S21, ठीक है, 1 प्लस S22। देखो कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, नहीं हुआ है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, है ना। तो ये वाला पार्ट जो है वो लास्ट में नहीं आएगा। एक बार फिर से बता दूं क्या किया मैंने। देखो आपके पास एक 2 पोर्ट नेटवर्क दिया हुआ था, स्कैटरिंग पैरामीटर ऑलरेडी सप्लाइड था। प्रॉब्लम में ये पूछा गया है बस लोड को सॉर्ट कर दो और एक जो नया 1 पोर्ट नेटवर्क आएगा उसका S11 निकाल लो। अगर मैंने इसको सॉर्ट किया तो रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट और इंसिडेंट कंपोनेंट का रेशियो जो है वो -1 हो जाएगा। वर्चुअली स्पीकिंग V2 प्लस और V2 माइनस जो है वो माइनस साइन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, विच वी हैव ऑलरेडी सीन। इसके बाद वापस से मैं इक्वेशन लेके आता हूं जो मैंने 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए यूज किए थे। रिफ्लेक्टेड वोल्टेज कंपोनेंट्स और इंसिडेंट वोल्टेज कंपोनेंट्स को आपस में S11 S12 S21 S22 से कनेक्ट किया गया था। इतना कर लिया, ठीक है। बस इस पूरे के पूरे इक्वेशन में मुझे V1 माइनस और V2 प्लस का रेशियो चाहिए था, ठीक है। लेकिन आपने चूंकि लोड को सॉर्ट कर दिया है तो V2 माइनस और V2 प्लस जो है वो आपस में माइनस साइन से कनेक्ट हो गए। तो ऊपर के इक्वेशन में ना आप V1 माइनस और V1 प्लस का रेशियो निकाल लेते तो बात ही खत्म होती, नहीं। लेकिन V2 प्लस एक्स्ट्रा है तो एक काम करते हैं ना, दूसरे इक्वेशन में V2 प्लस और V2 माइनस के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको फीड करते हुए मैं इस V2 प्लस को अगर V1 प्लस या V1 माइनस के बराबर रख लेता हूं तो कल के दिन क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। देखो वही कर रहा हूं मैं, यही किया मैंने, कुछ नहीं किया। वापिस से V1 माइनस इज इक्वल्स टू S11 V1 प्लस S12 V2 प्लस, नीचे मैंने लिखा है देखिए
V2 माइनस इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ V2 प्लस S21 V1 प्लस S22 V2 प्लस, इसको मैं लेफ्ट की तरफ लेके आ रहा हूं, ये भी माइनस हो गया तो ये क्या हो गया 1 प्लस S22 और बाहर निकल गया माइनस ऑफ V2 प्लस, और इधर राइट साइड में S21 V1 प्लस। ठीक है, अब यहां वापस से क्या कर रहा हूं मैं, V2 प्लस निकाल रहा हूं, तो V2 प्लस आया है माइनस टाइम्स ऑफ S21 डिवाइड बाय 1 प्लस S22 V1 प्लस। यस सुनो, यस। चलिए, ये अगर डेटा आ गया तो ये डेटा मेरे को यहां फीड करना है, तो ये होगा S21 1 प्लस S22 प्लस, और यहां देखें 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 कहीं मिस्टेक हुआ है, S12 और भी है ना, यस S12 और भी है मेरे भाई, ये S12, ये होगा S12। तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो होने जा रहा है, बिल्कुल क्या बोला है आप लोगों ने, क्या बोला है आप लोगों ने, बोलो बोलो फटाफट बोलोगे भैया। यस यस, बी इज राइट, बी इज राइट, बी इज परफेक्टली राइट, यस। ठीक है, चलिए आज की क्लास का मैं एक लास्ट क्वेश्चन लेने वाला हूं, और लास्ट क्वेश्चन जो है वो लास्ट टू लास्ट ईयर आया हुआ है। ट्रांसफॉर्मर का एनालिसिस करते हुए स्कैटरिंग पैरामीटर या स्कैटरिंग मैट्रिक्स एक्स एस निकालना था, एक अच्छा क्वेश्चन है। सो लेट मी सी इस क्वेश्चन को कहां मिलेगा मुझे, 2020 का क्वेश्चन है गेट का, देखते हैं कहां मिलेगा। ये सोडो, ये 45th क्वेश्चन था शायद। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था एक, अच्छे से रीड करना, मैं इसके लिए आपको 3 से 4 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अच्छे से रीड करो 46 क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, A two-port network consisting of an ideal lossless transformer, एक ideal lossless transformer है, इसका मतलब आप जितना पावर इनपुट दे रहे हैं at any instant of time उतना ही आप पावर डिलीवरी में ले रहे हैं। The parameter S21 rounded off to 2 decimal place for the reference input of 10 ohm। reference input का मतलब इस ट्रांसमिशन लाइन के लिए कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जो यूज करना होगा वो 10 ohms लेंगे, और यहां से आपको S21 केवल एक पैरामीटर कैलकुलेट करने पूछा है। लेकिन अगर आप लोगों को ध्यान हो S21 कैलकुलेट करने के टाइम पे आपको S12 का रेफरेंस, S11 का रेफरेंस लेना ही पड़ेगा। तो वर्चुअली स्पीकिंग आप इस प्रॉब्लम में सबसे पहले S11 निकालें और उसके बाद निकालें S21। तो मैं आप लोगों को 2 से 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं ये प्रॉब्लम को खुद से समझने के लिए। अच्छे से रीड करेंगे प्रॉब्लम को और बताएंगे कि इसका बेस्ट मोस्ट आंसर क्या ही हो सकता है, व्हाट मस्ट हैव बीन द बेस्ट मोस्ट आंसर। चलो जल्दी जल्दी ट्राई करो, जल्दी जल्दी ट्राई करो। पहले आप निकालेंगे S11 की वैल्यू, उसके बाद निकालेंगे S21 की वैल्यू। और ये गेट 2020 का क्वेश्चन है, जैसे आप देख पा रहे होंगे ऊपर में पीडीएफ का नाम भी लिखा हुआ है, देखो कहाँ गया ये 2020 पेपर, इलेक्ट्रॉनिक्स 2020 का क्वेश्चन है। इट इज बीन अ वेरी वेल क्राफ्टेड क्वेश्चन। गेट 2020 का है क्वेश्चन ये। थोड़ा भी दम लगाओगे तो बन जाएगा क्वेश्चन, ऐसा भी नहीं कि ना बने। लगाओ लगाओ फटाफट दम लगाओ। देखिए एक चीज तो क्लियर है कि आपके पास एक ट्रांसफार्मर है जो लॉसलेस इन नेचर है। तो सबसे पहले लॉसलेस ट्रांसफार्मर का बेसिक फंडामेंटल अपन रीड कर पाए, तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द पावर इन इनपुट पोर्ट या पोर्ट 1 वुड बी सेम एज द पावर एट आउटपुट पोर्ट। तो इसका मतलब यहां पूरा का पूरा फ्लक्स जो है प्रॉपरली सेकेंडरी बाइंडिंग में लिंक हुआ है, और जो पावर आपने यहां इंट्रोड्यूस किया था वो पूरा का पूरा पावर फिर से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में लोड तक चला गया है, मतलब कि कोई भी लॉसेस नहीं देखने को मिले। P1 इज इक्वल्स टू P2, और P1 अगर P2 के बराबर है तो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन तो जरूर निकाल लेना चाहिए यहां से, और वो है P1 इज नथिंग बट वोल्टेज एंड करंट रेशियो इन पोर्ट 1, एंड P2 होगा वोल्टेज और करंट का रेशियो इन पोर्ट 2।
लेट्स टेक दिस इज बीन द करंट विच इज बीन फ्लोइंग इन इनटू प्राइमरी बाइंडिंग, और I2 है जो सेकेंडरी बाइंडिंग में लोड की तरफ फ्लो हो रहा है. सिमिलरली V1 is been the voltage across the primary binding and V2 is been the voltage across the secondary binding. ये secondary binding. ठीक, V1 into I1 is equals to V2 into I2. आगे एक काम करते हैं, वोल्टेज को एक तरफ सेग्रीगेट करते हैं, करंट को एक तरफ सेग्रीगेट करते हैं. V1 एक काम करें, V2 को आप लेफ्ट की तरफ लेके जाएं तो राइट में I2 और I1 का रेशियो निकलेगा. और ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है, नेटवर्क आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर वगैरह में पढ़ा है, ये N1 और N2 के रेशियो के बराबर होता है. कैसे होता है ये अपन देख सकते हैं, बट ये मेरा एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है. तो मैं बोल सकता हूं कि प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग में वोल्टेज का रेशियो इज बीन वेरी सेम एज current in secondary and primary binding is been very same as the turn ratio, where the N1 is been the number of turn in primary binding and N2 is been in secondary binding. N2 is been in secondary binding. देखो देखो, अगर आप S11 कैलकुलेट करो या S21 कैलकुलेट करो, ये तो पक्का है कि आपको लोड के साइड में V2 प्लस को जीरो इंश्योर करना है. और V2 प्लस को अगर जीरो इंश्योर करने का एक ही तरीका है कि आपको जो V2 माइनस है उसको कोई भी रिफ्लेक्शन देखने को ना मिले और पूरा का पूरा रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट जीरो हो जाए. इसके लिए लोड को रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को जीरो करना होगा. लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को जीरो केवल एक तरीके से किया जा सकता है, ZL को Z0 से मैच करके. और Z0 कितना है, 10 ओम. तो ये मान के चलो कि चाहे आप S11 का कैलकुलेशन कर रहे हो या फिर S12 का कैलकुलेशन कर रहे हो, आपको लोड को तो मैच रखना पड़ेगा. और एटलीस्ट इस प्रॉब्लम में क्लियर है कि आपके लोड इंपीडेंस ZL की वैल्यू Z0 के बराबर रखनी पड़ेगी, जो प्योर रजिस्ट्री इन नेचर है. तो इसका मतलब इस कैलकुलेशन में एटलीस्ट लोड रेजिस्टेंस तो आप 10 ओम रख के ही कैलकुलेट करेंगे. यस और नो? तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये प्रॉब्लम S11 का होता या S12 का होता, आपको लोड को मैच रखना पड़ेगा ट्रांसमिशन लाइन के कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस से, जिससे कि कोई भी रिफ्लेक्शन ना देखने को मिले. क्वाइट ओके सर, यहां तक तो बिल्कुल समझ में आता है. चलिए अब एक स्टेप और आगे जाते हैं. एक काम करते हैं ना, सबसे पहले अब S11 पे फोकस करते हैं. बताएंगे S11 क्या होता है. S11 जो है, इट इज बीन द रेशियो ऑफ V1 माइनस ओवर V1 प्लस इन द गिवन लिमिटिंग केस कि V2 प्लस की वैल्यू जीरो होनी चाहिए. हाँ सर. और V2 प्लस की वैल्यू जीरो करने के लिए आपने ऑलरेडी लोड को कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस से मैच कर दिया है. तो ये V2 प्लस इज इक्वल टू जीरो अलग से लिखने की नीड नहीं है. जो गिवन सर्किट है वहां आपने बाय डिफॉल्ट V2 प्लस को जीरो इंश्योर कर लिया है. तो अब आपको करना क्या है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट का रेशियो देखना है. तो ये देखें, ये रहा आपके पोर्ट 1 में इंसिडेंट कंपोनेंट V1 प्लस, और यहां से रहा ये रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट V1 माइनस. इन दोनों का रेशियो देखना है, बस इतना ही करना है आपने. और ये निकाल के देगा आपके S11 की वैल्यू, S11 की वैल्यू. और ये निकालने का सीधा सा तरीका था, कुछ नहीं करना था आपको, इफेक्टिवली यहां से लोड देखना था, ZL माइनस कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस Z0 डिवाइड बाय ZL प्लस Z0. तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि प्राइमरी बाइंडिंग से आप इनपुट इंपीडेंस कितना देख पाएंगे. आप लोगों ने ये चीज नेटवर्क में भी पढ़ा होगा और एनालॉग में भी पढ़ा होगा कि अगर एक ट्रांसफॉर्मर AC एक्साइटेड है तो इनपुट इंपीडेंस आपको कितना देखने को मिलता है. तो यहां से इनपुट इंपीडेंस कितना देखने को मिलेगा, 10 ओम नहीं देखने को मिलेगा. कितना देखने को मिलेगा, अब वो कैलकुलेट करते हैं. आगे बात समझ में? तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको S11 निकालना भी है तो वर्चुअली आपको इफेक्टिव लोड चाहिए होगा यहां से, कि यहां से कितना इनपुट इंपीडेंस देखने का मौका मिला. Zin माइनस ऑफ Z0 डिवाइड बाय Zin प्लस ऑफ Z0. बताएंगे मेरे को कितना देखने को मिला, सबके सब कितना देखने को मिला. देखो इसका सीधा सा तरीका है, अगर इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का आप रेशियो ले लिए, V1 और I1 का रेशियो निकाल लिए, तो आप RN निकाल लिए. तो देखो V1 और I1 का रेशियो कैसे ही निकाला जा सकता है, थोड़ा शांति के साथ देखेंगे. तो V1 किसके बराबर होगा, थोड़ा सा ध्यान देना. V1 जो होगा वो होगा V2 इंटू N1 डिवाइडेड बाय N2. ठीक है, बिल्कुल सर. V1 इज गोइंग टू बी, कलर चेंज कर लेता हूं, N1 डिवाइडेड बाय ऑफ N2 इंटू V2 इज इक्वल्स टू. देखो इस प्रॉब्लम में V2 अप्रोच करना ज्यादा आसान है. क्यों अप्रोच करना ज्यादा आसान है, क्यों? क्योंकि ये I2 जो है वो 10 ओम्स के ऊपर करंट फ्लो करा रहा है और यहां जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही V2 होगा. तो V2 कितना होगा, 10 इंटू I2. तो V2 को क्या लिख सकते हैं अपन, 10 इंटू I2. लेकिन चाहिए मुझे अभी भी V1 और I1 का रेशियो. तो I2 को I1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है. देखो I2 किसके बराबर है, N1 डिवाइड बाय N2 इंटू I1. तो यहां से होगा क्या, देखो V1 आ गया, N1 डिवाइडेड बाय ऑफ N2 इंटू 10 इंटू I2 को क्या लिखा जा सकता है, मैंने बताया N1 डिवाइडेड बाई ऑफ N2 इंटू ऑफ I1. तो यहां से V1 और I1 का रेशियो आप निकाल पाए. और लेकिन इस बीच में क्या हुआ, 10 N1 और N2 का 2 बार मल्टीप्लीकेशन हो गया, ये हो गया स्क्वायर.
स्क्वायर, और ये निकल रहा है आपके आर इन की वैल्यू। तो यहां वैल्यू कितनी हुई 10, n1:n2 क्या है ध्यान देना, प्राइमरी साइड डबल है और सेकेंडरी साइड सिंगल है, तो ये होगा 2 का स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी कितनी 40। और आप लोगों को ये चीज सब लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास n1:n2 का टर्न रेशियो है, तो आप इनपुट साइड से जो इंपिडेंस देखेंगे, जिसको मैं बोलता हूं जेड इन इज इक्वल्स टू n1 डिवाइडेड बाई ऑफ n2 रेज टू द पावर ऑफ 2 इंटू आर ऑफ एल। कितने लोगों ने पढ़ा है, एक बार फटाफट बताओगे मेरे को कमेंट बॉक्स में, कितने लोगों ने पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा है, एक बार फटाफट बताओ मेरे को। हाँ, अगर बाय द वे ये निकल गया तो बचा ही क्या मेरे को, देखो इफेक्टिवली इनपुट इंपिडेंस कितने का हुआ 40 का, ये हुआ 40। जेड नॉट ऑलरेडी इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है कितना 10, ठीक है 10, और नीचे होगा 40 और 10, तो ऊपर हो गया 40 में से 10 गया 30, 30 और नीचे हो गया 50, तो ये होगा 3/5। कल के दिन इवन S11 भी टेढ़ी खीर थी, इतना आसान नहीं था निकालना। सो S11 मस्ट हैव बीन 3/5, S11 must have been 3/5। ठीक, अब कोई बताएगा मेरे को यहां से S21 कैसे निकालेगा? हाउ शुड आई गेट द वैल्यू ऑफ S21? S21, तो अगर आप वापस से स्कैटरिंग मैट्रिक्स के लीनियर इक्वेशंस को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो S21 इज बीन द रेशियो ऑफ व्हाट, V2 माइनस डिवाइडेड बाय ऑफ V1 प्लस, विद द सेम रिक्वायरमेंट कि V2 प्लस की वैल्यू 0 होनी चाहिए, V2 प्लस की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और ये निकालना भी बहुत आसान था। देखो V2 माइनस, भाई एक चीज तो पक्का समझ में आ गया कि यहां से कोई रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट देखने को नहीं मिल रहा है, तो V2 माइनस ही V2 होगा। आई रिपीट, V2 माइनस ही V2 होगा। तो एक काम कर सकते हैं, इसको V2 रख सकते हैं, देखो V2, और नीचे रख सकते हैं V1 प्लस। V1 प्लस क्या होगा? अरे V1 प्लस कुछ नहीं होने वाला भाई, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट का। तो यहां सब मेरे को फटाफट एक बार वैल्यू निकाल के दो, व्हाट मस्ट बी द बेस्ट मोस्ट आंसर, बेस्ट मोस्ट आंसर क्या ही होगा बताओ। नहीं समझ में आएगा, नहीं आएगा नाजीर। एक्चुअली में ये मान के चलो कि अगर तुम कल की क्लास अटेंड नहीं किए हो, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। स्कैटरिंग मैट्रिक्स एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो टॉपर्स डिसाइड करते हैं, मतलब कि जिससे बन गया वो शुरू के 200 में शामिल हो जाता है, और जिनसे नहीं बना वो बाकी भीड़ में शामिल हो जाता है। तो अगर आप ये सोच रहे होगे कि आज की क्लास में अटेंड करते हुए सीधे स्कैटरिंग पैरामीटर बना पाओ, तो मैं इसके लिए एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि कल की क्लास जरूर अटेंड कर लेना, उसके बाद आना, सब चीज बनेगा आपको। चलो चलो फटाफट देख लो। तो V2 माइनस और V1 प्लस के बीच का रेशियो निकालना है। तो V2 माइनस और V1 प्लस के बीच का रेशियो कैसे निकालोगे, अब ये देख लो। लिंक लिंक लिंक, एक काम करो ना, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाओ, और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए हो कि नहीं? नहीं किए हो तो बिल्कुल करो भैया, टेलीग्राम ग्रुप फटाफट ज्वाइन करो। मैं दिखा देता हूँ आपको टेलीग्राम ग्रुप, ये ज्वाइन करो। लिख दूं, कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, यहाँ लिखो, ये देखो, ये होगा t.me GA11 कोर ट्रायो ईसी, इसको ज्वाइन कर लो। वहां मैं लिंक भी डाल रहा हूं आपको। बाकी लोग आंसर निकालो, बाकी लोग आंसर निकालो फटाफट, मैं लिंक डाल देता हूं वहां। तो लिंक अभी मिल जाएगा आपको, देखो उस पहले आप इसको ज्वाइन कर लो। ये रहा, डाल दिया मैंने। भाई जिनने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया होगा, तो पूरे के पूरे अपडेट्स, पूरे के पूरे पीडीएफ जिसका रेफरेंस लेके हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, वो सब आप लोगों को वहां मिलता है। ये बट हाँ नाजिर, एक चीज जरूर बोलूंगा कि स्कैटरिंग पैरामीटर से जितने क्वेश्चंस आ सकते थे, उसके आधे के आधे भी नहीं आए हैं। तो बिल्कुल एक्सपेक्ट करो कि इन फ्यूचर लगातार तरीके से स्कैटरिंग पैरामीटर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बी रेडी फॉर दैट, बी रेडी फॉर दैट। चलिए यहां तक तो ठीक है। अंकित, अब आगे बताओ मेरे को आंसर कैसे निकलेगा। V2 माइनस और V1 प्लस के बीच का रेशियो कैसे निकालोगे? हाउ विल आई गेट दिस रेशियो, V2 माइनस एंड V1 प्लस के बीच का रेशियो? देखो फटाफट बताओ ना कैसे होगा। हाउ विल आई गेट दिस वैल्यू, हाउ विल आई गेट दिस वैल्यू, निकालो। देखो अब एक काम करेंगे, एक चीज तो पक्का है,
लोड साइड में कोई भी रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट देखने को नहीं मिल रहा है, बोले तो V2 प्लस की वैल्यू जीरो है। अगर V2 प्लस की वैल्यू जीरो है तो V2 जो है वो V2 माइनस के बराबर ही है। तो मैंने क्या कर लिया, V2 माइनस को सीधे सीधे V2 ले लिया। अब कोई पूछेगा ऐसा क्यों? मेरे भाई ये जो इक्वेशन है ना, कहाँ गया अपना इक्वेशन? ये इक्वेशन ये केवल केवल टोटल वोल्टेज और टोटल करंट से डील कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इस इक्वेशन को वापस से यहाँ रीयूज करके कुछ कैलकुलेशंस कर लूं, और या वापस आके S11 के रिप्लेसमेंट के थ्रू मैं कुछ कैलकुलेशंस कर लूं। अब देखें यहां पर V2 माइनस और नीचे है V1 प्लस। तो एक काम करें ना, V1 प्लस को क्या लिखा जा सकता है, थोड़ा शांति के साथ देखेंगे। तो V1 प्लस को लिखा जा सकता है मेरे भाई V1 V1 माइनस लिखा जा सकता है V1 माइनस। चलो फटाफट अब कैलकुलेट करके दिखा दो कि वैल्यू कितनी आ रही है, हाउ मच वैल्यू वी हैव बीन गेटिंग। और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 2 बच्चे 3 बच्चे जो लगातार अटेंड कर रहे हैं वो आंसर तो निकाल के दिखाएंगे। ये वैल्यू कितनी आनी है, मैं 2 से 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को आंसर अभी निकाल के दिखाना है कि आंसर कितना आएगा। मैं आप लोगों को S11 तक हेल्प कर दिया हूँ, इसके आगे आप लोगों को खुद का हेल्प करना है। बताएं जल्दी जल्दी बताएंगे। जल्दी जल्दी बताओ। इसके बाद सब लोगों का आंसर निकलना चाहिए भाई, अब इसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 मिनट का टाइम तो और दे रहा हूं मैं आप लोगों को, फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्रोसेस क्या है ये ध्यान रखना। आप लोगों को ऑलरेडी S11 की रेशियो पता है, कितनी कितनी आई है आपकी 3/5, और वो क्या था आपका V1 माइनस और V1 प्लस के बीच का रेशियो है। अब आपको V2 माइनस और V1 प्लस के बीच का रेशियो निकालना है। थोड़ा सा सावधानी के साथ कैलकुलेशन करो, आसानी से कर लोगे, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। देखो निकाल लो। 2 मिनट के लिए मैं बोर्ड से बाहर हो रहा हूँ, फटाफट निकाल लो उसको। 2 मिनट बोर्ड से बाहर हो रहा हूँ, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, तो आप लोग उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करो। तो मैंने S11 निकाल लिया, S21 जो है V2 माइनस और V1 प्लस के बीच का रेशियो है, और यही सर्किट का रेफरेंस लेके अपने को कैलकुलेशन करना है। बताए आंसर क्या आएगा, व्हाट मस्ट बी द बेस्ट मोस्ट आंसर। कितना आएगा मेरे भाई, लोग कैसे कर रहे हो यार? चलो देखो, देखो मैं वापस से आऊंगा और करूंगा क्या यहाँ पर, थोड़ा सा सावधानी के साथ देखना। V2 माइनस को मैंने V2 तो मान लिया है। एक काम करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में V1 से डिवाइड करते हैं। तो ये ऊपर क्या होगा, देखो भैया V2 माइनस को अपन ने V2 ऑलरेडी ले रखा है, और ये होगा V1, ठीक है। और नीचे भी अपन यही काम कर रहे हैं, तो नीचे अगर ये काम करेंगे तो क्या होगा V1 प्लस, और नीचे क्या होगा V1। अब V1 को अपन 2 पार्ट में बाइफरकेट कर सकते हैं, एक पार्ट होगा V1 प्लस का और एक पार्ट होगा V1 माइनस का। इतना तो अग्री कर रहे हो सबके सब? हाँ सर। यार V2 डिवाइड बाय V1 लेने के पीछे रीजन क्या था? क्योंकि ये नौटंकी मेरे को ऑलरेडी पता है कि V2 और V1 का रेशियो कहाँ गया भैया मेरे, V2 और V1 का रेशियो ये होगा N2 और N1 के रेशियो के बराबर। V2 और V1 का रेशियो जो होगा वो N2 और N1 के रेशियो के बराबर होगा, और यहां पर ये रेशियो है 1:2, गलती से 2:1 मत दिखना, ठीक। और यही चीज अब मैं यहां भी कर रहा हूं, देखो क्या कर रहा हूं मैं, V1 को इन दो टर्म्स में अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं। तो ऊपर तो हो गया 1, ठीक है सर, और नीचे होगा V1 प्लस डिवाइडेड बाय V1 प्लस जो होगा कितना 1, और नेक्स्ट होने वाला है V1 माइनस डिवाइडेड बाय V1 प्लस जो ऑलरेडी आपने निकाल रखी है कितनी 3/5। 3/5 को आप चाहें तो आप लिख सकते हैं कितना 0.6। यस सुनो, यस सर। तो वैल्यू हुई कितनी है, देखो ये हुई 1/2 इन डिवीजन विथ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.6, इसको मैं लिख सकता हूं इनटू 1.6, और जब आप इनको स्मैश करेंगे आंसर आने वाला है 0.8। नहीं नहीं, बफरिंग मेरे साइड कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, बफरिंग मैं सामने देख रहा हूं ना, नहीं कर रहा है। ये बताओ ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं?
फिर से रिपीट करूंगी इस प्रॉब्लम की नीड क्या थी। इस प्रॉब्लम में सबसे पहले एक टू पोर्ट आइडियल लॉसलेस ट्रांसफार्मर दिया हुआ था। एक था इनपुट पोर्ट और एक था आउटपुट पोर्ट, ठीक है। इसको मैंने मान लिया प्राइमरी बाइंडिंग और ये है आपका सेकेंडरी बाइंडिंग। लॉसलेस का मतलब ये है कि एट एनी इंस्टेंट जो आप जितना पावर आप डिलीवर करते हैं इनपुट साइड में, वो आउटपुट साइड में इलेक्ट्रिकल पावर बन के लोड तक पहुंच जाएगा। बोले तो इन बिटवीन आपके फ्लक्स के कहीं लॉसेस वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। इट्स क्वाइट ओके। वहीं से स्टार्ट होता है P1 इज इक्वल्स टू P2, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम जो है वो पावर बनाएगा P1 इज इक्वल्स टू P2। इनपुट पावर जो होगा या प्राइमरी बाइंडिंग पे जो पावर होगा उनके वोल्टेज और करंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, एंड सेम गोस विद द सेकेंडरी एज वेल। यहां से रिलेशन निकाल पा रहे हैं आप V1 और V2 और सिमिलरली I2 और I1, और इसका रेशियो जो है वो N1 बाई N2 के बराबर होता है। ये आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। इस सीक्वेंस में आगे देखते हैं। अपने को सबसे पहले S11 निकालना है। ऑल्दो प्रॉब्लम की नीड थी S21, लेकिन फोकस करूंगा मैं S11 पे। क्यों? ऑलरेडी देखा हुआ है S21 निकालने के लिए S11 की नीड होती है, ठीक। S11 क्या होता है? V1 माइनस डिवाइड बाय V1 प्लस, और साथ में V2 प्लस की वैल्यू को जीरो इंश्योर करना होता है। बोले तो लोड साइड से कोई सा भी कंपोनेंट रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आना चाहिए, और इसका इंश्योर करने का एक ही तरीका है कि लोड इंपेडेंस ZL की वैल्यू Z0 से मैच करा लो। Z0 की वैल्यू 10 ओम है, तो मैंने यहाँ 10 ओम कनेक्ट कर दिया। देखिए अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं S11 कैसे कैलकुलेट करोगे? यहां से जो आपको इफेक्टिव इनपुट इंपेडेंस देखने को मिल रहा है दैट इज बीइंग Zin माइनस कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस Z0, Zin प्लस Z0, ये ऑलरेडी देख रखा है आपने, ठीक है। Zin कितना देखने को मिलेगा? तो Zin के लिए मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों को नेटवर्क सॉल्व करना आता है। प्राइमरी बाइंडिंग से इफेक्टिवली जो आप इनपुट इंपेडेंस देखते हैं वो देखने को मिलता है Zin इज इक्वल्स टू N1 डिवाइड बाय N2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 इंटू RL, ठीक। तो N1 2 का है, N2 1 का है, तो ये होगा 2 डिवाइडेड बाय 1 रेज़ टू द पावर ऑफ 2, और RL की वैल्यू 10 है। वर्चुअली स्पीकिंग 2 का स्क्वायर होगा 4 इंटू 10, ये कितना होगा? 40 ओम्स। ये कितना होगा? 40 ओम्स होगा सर, बिल्कुल होगा, ये होगा 40 ओम्स, ठीक। अब ये निकल चुकी है आपके S11 की वैल्यू। अब बात कर रहे हैं आप S21 क्या होगा? V2 माइनस डिवाइड बाय V1 प्लस। लोड पे तो यार V2 माइनस और V2 प्लस की तो कोई बात ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? V2 प्लस 0 हो गया है, तो वर्चुअली V2 माइनस ही V2 होगा। अब कोई ये बोले कि ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? मेरे को ट्रांसफार्मर का जो इक्वेशन मिला है वो तो कंप्लीट वोल्टेजेस का रिलेट करेगा ना, ठीक है सर। तो इसको मैंने V2 ले लिया, ऊपर और नीचे मैंने V1 से डिवाइड कर दिया। तो V1 से डिवाइड हो गया, V1 से डिवाइड हो गया। V1 के दो पार्ट होंगे, एक होगा इंसिडेंट पार्ट और एक होगा रिफ्लेक्टेड पार्ट। और यहां से जब मैंने आंसर निकाला तो आंसर इज बीइंग 0.8, आंसर इज बीइंग 0.8। ये बताओ किन किन लोगों ने ये क्वेश्चंस एक्सपीरियंस किया अपने टाइम पे? किन किन लोगों ने ये क्वेश्चंस एक्सपीरियंस किया है अपने टाइम पे? किन किन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है ये क्वेश्चन अपने टाइम पे? एक क्वेश्चन और लेता हूं, तो एक दो क्वेश्चन और आप लोगों से फटाफट क्विक रिव्यू के लिए ले लेता हूं। फिफ्टी 25 और मान लिया कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस दोनों साइड है 25। ये है मेरा पोर्ट 1 और ये है मेरा पोर्ट 2। दिस इज बीन माई पोर्ट 1 एंड दिस इज बीन माई पोर्ट 2। आपको S11 की वैल्यू निकाल के देनी है फटाफट, और कैलकुलेशन करने के लिए आपको कॉपी और पेन की नीड नहीं होनी चाहिए। बताएं वैल्यू कितनी होगी? जल्दी जल्दी बताएंगे। व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ओवर हियर? S11 की वैल्यू कितनी होगी भाई मेरे? बताओ जल्दी जल्दी, S11 की वैल्यू कितनी होगी? व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ S11? देखो भैया कुछ नहीं करना है, S11 के लिए वही टोपोलॉजी मेथोडोलॉजी यूज करना है जो अभी तक यूज करते आए हैं। S11 इज बीन द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एट इनपुट साइड or in port 1 if there had not been any reflection towards port 2, or I should say the S11 is being the ratio of reflected component port 1 incident component in port 1 keeping the reflected component in port 2 is equals to 0। तो ये होगा V2 plus is equals to 0। देखो आंसर आना भी चालू हो गया। ग्रेट 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 ग्रेट। और ये करने के लिए कुछ नहीं करना होगा, मुझे लोड को मैच करना होगा कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस से, जो कितने का है? 25 का है। और मैंने जानबूझ के इसको 25 लिया है ना। क्यों 25 लिया है? क्योंकि ये 25 और ये 25 मिलके कितने होंगे? 50 होंगे। और ये 50 और ये 50 पैरेलल में आके कितना होंगे? 25 होंगे। और ये 25 और ये 50 मिलके कितने होंगे? 75 होंगे। तब ये बताओ ना मेरे को V1 माइनस होगा क्या? अब इसका इफेक्टिवली इनपुट इंपेडेंस देख लो, ये होगा Zin
माइनस ऑफ जेड नॉट डिवाइड बाय जेड इन प्लस ऑफ जेड नॉट। अरे हाँ कि नहीं? यस सर। तो इफेक्टिव जेड इन कितना हुआ? 25 प्लस 25 इन सीरीज 50, 50 इन पैरेलल 50 होगा 25, 25 प्लस 50 ये कितना होगा? 75। यस और नो? यस। माइनस 25 divided by of 75 plus of 25 plus of 25, and the result has been 50 divided by of 100, and this worth has been 1 divided by 2, 1 divided by 2. Yes or no? Yes or no? चलो लगे हाँ तब S11 तक पहुंच गए हो तो एक काम करो, S12 भी कैलकुलेट करो। और प्रॉब्लम में हमेशा और हमेशा S11 और S12 जो है एरिया ऑफ कंसर्न होता है। बताएंगे S12 कितना होगा? व्हाट मस्ट बी द वर्थ ऑफ S12? जल्दी जल्दी बताएंगे। और S12 कैलकुलेट करने में थोड़ा तकलीफ होगा, बट स्टिल वी विल बी एबल टू मैनेज। नो नो सॉर्ट नो, ऐसा कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं होने वाला। जल्दी से बताइएगा। देखो S12 निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या था? सर्किट अभी भी ऐसा ही होगा, क्योंकि S12 के लिए भी अभी आपको लोड को मैच चाहिए होता है, तो ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट होगा। यहां वोल्टेज होने वाला है V1, और V1 के पास दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा इंसिडेंट कंपोनेंट और एक होगा रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट। दोनों मिलकर बनाएंगे आपका V1। दैट इज फाइन सर। लेकिन ये V का कितना पार्ट जो है वो लोड तक पहुंचेगा, और लोड तक जो वोल्टेज पहुंचेगा वो केवल V2 माइनस होगा। और V2 माइनस को चाहो तो आप V2 भी लिख सकते हो। तो आप ये बताओ ना कि V1 का ऑल द वे यहां वोल्टेज कितना पहुंचेगा। एनीवेज इफ वी फोकस ओवर द V12, इट इज बीन द रेशियो ऑफ V2 माइनस ओवर V1 प्लस, V1 प्लस। यस, V2 माइनस को आप V2 भी ले सकते हो, नथिंग ग्रेट। वही कहानी लिखूंगा जो मैं लिखता आया था। देखो क्या लिखूंगा वो कहानी। देखो अलग अलग सर्किट के लिए यहां से प्रोसेस जो है वो अलग अलग होगा। देखो क्या लिख सकता हूं मैं, V2 को मैं V1 से डिवाइड करता हूं, और V1 प्लस को भी मैं V1 से डिवाइड करता हूं, तो कहानी आसान हो जाएगी। V2 और V1 के बीच का रेशियो निकल पाएगा। अरे हाँ, अभी तक नेटवर्क में यही तो करते रहे थे। देखो होगा क्या, ये 25 और 25 कितना होगा? 25 और 25 50 होगा, 50 और 50 कितना होगा? 25 होगा। वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओगे तो यहां तो वोल्टेज निकल सकता है। यहां वोल्टेज कितना निकलेगा मेरे भाई, फटाफट बताओगे? यहां होगा देखो 25 और 25 50, 50 इन पैरेलल विद 50 ही होगा 25, मतलब कि 25 के अक्रॉस इफेक्टिवली वोल्टेज निकालना है, और सीरीज में 50 ऑलरेडी लगा हुआ है, तो होगा 25 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 50, ये होगा 75, और ये होगा V1 इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस दिस टर्मिनल। V2 नहीं है ये, मैंने इसको ले लिया Vx। तो Vx कितना निकल के आया है? V1 डिवाइडेड बाय ऑफ 3। अब ध्यान देना, यहां तो वोल्टेज निकल गया। अब ये ऑल द वे वोल्टेज आपको यहां तक पहुंचाना था, और यहां पहुंचाने के लिए आप फिर से वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओगे। 25 25 आधा आधा बढ़ जाएगा, तो अब मैं बोल सकता हूं V2 इज इक्वल्स टू V1 डिवाइडेड बाय 3 इनटू 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये वैल्यू हो जाएगी V1 डिवाइडेड बाय 6। अरे हाँ कि नहीं? V2 की वैल्यू कितनी आई? V1 डिवाइडेड बाय 6। तो अब मैं ये बोलूं कि V2 डिवाइड बाय V1 का खात्मा हो चुका है सर। ये 1/6 पार्ट ही जो है वो लोड तक पहुंच पाया है। अब V1 प्लस और V1 के बीच का रेशियो निकालना काफी आसान था। कैसे आसान था देखें, ये होगा V1 प्लस और नीचे होगा V1। V1 को क्या लिख सकते हैं अपन? V1 प्लस प्लस ऑफ V1 माइनस, ये हो गया 1/6। एक काम करते हैं, V1 को जब डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1, और ये होगा V1 माइनस ऑफ V1 प्लस, और V1 माइनस ऑफ V1 प्लस ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर रखा है। कितना कैलकुलेट किया देखो, S11 निकाला है, नहीं निकाला है? S11 ये 0.5 ये, तो वर्चुअली स्पीकिंग ये हो रहा है 1 डिवाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय ऑफ 0.5, और ये वैल्यू निकालो कितनी आ रही देख लो, फटाफट देख लो वैल्यू कितनी आ रही है। हाउ मच वैल्यू वी हैव बीन गेटिंग ओवर हियर, कितनी आ रही है? अंजलि राजपूत 0.25, देख लो एक मिनट। वन डिवाइड बाय 6 देख लेते हैं यहां पर, ये है 1 डिवाइड बाय 6, ये हो गया, और इसको अपन ने क्या किया था? डिवाइड किया था किससे? 1.5 से ना, 1.5। देख लो कितनी आ रही वैल्यू है। देख लो देख लो देख लो, फटाफट देख लो, और ये होगा 1.5, ये होगा 1 डिवाइड बाय 9, 0.11 और 0.1 बार, ये निकल रही है। अगर चेक कर लो, फटाफट चेक कर लो यार, हो सकता है मैथमेटिकल मिस्टेक्स हो, बट मैं मान के चलता हूं कि आज के बाद से इससे इसके आगे
किसी भी तरीके का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दे दे, जैसा आप जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, एक्स पैरामीटर ये सब निकालते थे, बस उसी तरीके से आप पूरा का पूरा कैलकुलेशन आप एस मैट्रिक्स या एस पैरामीटर के लिए भी कर पाओगे। इज दैट पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ अस? ये बताएं मेरे को। अंजलि, हो जाएगा ये आगे? एक आध क्वेश्चन से और डील करना चाहोगे आप लोग? ये बताओ मेरे को। चलो, तो मैं मान के चलता हूं इतने क्वेश्चंस तो काफी हैं। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, नीचे कमेंट जरूर डालना, ड्रॉप करना कि अगला क्लास में किस टॉपिक कर लूं, है ना, वो बहुत जरूरी है। चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।